So, good evening, everyone. It is rightly said that nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful man with talent. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb. Education will not. The world is full of educated dialects. Persistence and determination alone are omnipotent. I, Plaksha Sharma, And I, Soumya Soni, will be your host for today's session. OGIS is the Club of Electrical Engineering Department that aims to foster better understanding and knowledge beyond academics and focusing more on real life applications. It has always aimed at conjoining efforts to broaden a student's horizon. The occult behind The occult behind every successful organization is the enlightening vision of its intuitive leaders and tireless efforts of its members. placeMENTOria, all about college placement. A session custom tailored for freshman and sophomore audience to inform them about the know-how of college placements. Also, as it being said, it is better to be prepared for an opportunity than to have an opportunity and not to be prepared. I can see many young and dynamic minds with excitement stocked in their hearts. As we all know, the very first thought that occupies our brain before getting into any college is about its placement index. How much package I'm going to get, how much students got placed, what type of companies provide on campus placement in the college, and many more such queries that take away your beauty sleep. Well, don't worry, because today Team Moses has organized an amazing session that will answer all your questions. So, first of all, let's start with what college placement is. College placement, also known as college recruitment, occurs when companies visit the college campus, conduct interviews, and hire candidates to work for them. These campus placements are coordinated by your college, which invites all of the best companies to recruit from their students. There are mainly two type of campus placements, on-campus placement and off-campus placement. On-campus placement. These placements or recruitment activities are held on the campus of the college or institute you are studying in. Off-campus placement. This is where you, as an individual, will seek employment on your own. It is completely up to you to get yourself placed in a company. An interview is the most crucial gateway to get into a desired organization for a desired job profile. And the three most important factors that an interviewer looks for in the candidate are competence, motivation, and the right fit. It is absolutely necessary for everyone to carve a distinct place for oneself in this highly competitive industry. The talent and skills should not be restricted only to domain area knowledge, but one should also be a multitasker and should be familiar with working in virtual teams. Effective performance is preceded by painstaking preparation, so refocusing your resources on better hiring will yield a return that almost any training program you can devise. Now, let's have a look at the companies which have come to our college this year. So, firstly, I will talk about IT companies. So, let's start. ZS, CSC, EC, EE, CSC Dual, EC Dual can give an interview for this. NatWest, CSC, EC, EE, CSC Dual. And then Paytm, CSC, EC, and EE. Standard Chartered, all branches can give interviews for that. Also, your favorite Amazon, always, all branches can apply, so don't you worry. Oracle, CSC, EC, EE, CSC Dual, and ECE Dual. American Express, all branches can apply. Dunzo, all branches can apply.
Salesforce, especially for girls, CSC, EC, EE, CSC dual, and EC dual can apply. Wells Fargo, CSC, EC, and EE can apply. And almost all others like Tredence, Infosys, DSP, EXL, Cinef, Accenture, Infosys SE, and Speed Labs. These are the IT companies. So now let's talk about some core companies. We have Graby, Aarti Industries, Tata Power, Thermex, Skinder Electrical, Ishurius, Hitachi Energy for electrical department. For civil, we got L&T, JSW, ACC, Ultratech, SP Singla, and Saint Gobain have come. For mechanical, we have Suzuki, Vardhaman, Bosch, and L&T. Also, I will name all the companies that are remaining: Deloitte, Insedo, Cape Gemini, Wipro, Factwise, Birlasoft MDocs, Planet Spark, Equanti, Expedia, Winjit, CalpGuru, TT Consultants, Josh Technology, Cyanoric, Brigosha, Galactics, GeoEXL, AVL, MathWorks, Avada, Florence Capita, Maruti Suzuki, One Blank, EXL, Geo, Cisco, Qualcomm, Siemens Limited, Holcim Group, ICICI Bank, Uthan, Lava International, Tata Power, Thermax, Cummins India, Titan, Adani, Navyug, GCC India, Bell, and some more. I think sharing experience makes everything better. When people get talking about how they have overcome something or heaven, it's nourishing. You gain strength, courage, and confidence by every experience. So, here we have some great personalities among us to light the path of young minds. With this being said, first of all, we have Mr. Ankush Sharma from ECE Department 2012 to 16 batch, who was currently working at Graby. Next up, we have Mr. Sahil Garg from Civil Department 2014 to 18 batch, currently working at IOCL Indian Oil Corporation Limited. Then we have Mr. Ritik Goyal from Electrical Department 2016 to 20 batch, currently working at NTPC, National Thermal Power Corporation. Then Then we have Mr. Karthik Saxena from CSC Dual Department 2016 to 21 batch, currently working as Software Development Engineer at Amazon. now let's move ahead with this amazing session and let's hand over the session to Mr. Ankush Sharma for bestowing valuable insights about college placements. Don't forget to drop your queries in the chat box. Good Hi evening, sir. everyone. Could you please confirm if you can hear me? Yes, sir. So right now, if I just turn on my cam, I can do this. Okay. So I think it's great to be in a session with my juniors. Yeah. Good to see you all. NIT Hamirpur is always something very close to my heart, and it always will. I think for most of you as well. So thank you for having me. I want to start this with this. Uh, Okay. So, could you help me with the questions? I think first of all, if there are any questions, I can start answering those. Otherwise, I can start sharing my experience. You know, working in the industry and how I've been taking interviews for like many years now. I think around 4 years definitely. So I can talk about that. Give you some tips about whatever I know. Yes, So yes, sir. You can how start would with you your like to start? experience. We can Okay. start with your experience. Yes. Okay. Perfect. Perfect. So, um. First of all, I think when I was in the college now, we did not had any such session. है ना? So now that you're having a session, it's a great thing. And if you're watching it, if you're trying, if you're actually here to listen to the experiences, you have already taken the first step, right? Okay, so know this. If you are already listening to this, you're going to be there. Okay. Um, Second of all,
I wanted to say that, uh, one difference that I feel when I interview students from NIT Hamirpur, and maybe when I interview students from some IITs or some other NITs, or maybe some private colleges as well. We go to for placements to a lot of colleges, so I see a clear difference. Sadly enough, I have to say that I see a clear difference in the preparation of the NIT Hamirpur students. Okay. Uh, I don't know, for some reason either the people are so chill that they'll just say कि अगर उनको पता है कि ना कि एक सीनियर ही बैठा हुआ है प्लेसमेंट के में, तो they'll come and say, सर हाय, आप तो अपने ही बंदे हो, तो देख लेना सर, है ना, तो which is fine, ठीक है, you can say that. But again, when the interview starts na, so give that interview with all that you have got, you know. It's very important for us to know whether we can work with you, है ना. We if अगर मेरे बस में होता ना, if it was up to me, I would have selected each one of you, sitting in the interview. But things do not work like that, of course. I think we all understand that. So यहाँ पे ना एक जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि प्रिपेयर करो, है ना. नो अबाउट द कंपनी, नो अबाउट द रोल दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर, एंड प्रिपेयर फॉर इट. ठीक है, हैव समथिंग प्रिपेयर्ड कि यार मैं ये तो जरूर डिस्कस करने वाला हूँ एटलीस्ट. ठीक है, एंड डिलीवर इट इन द इंटरव्यू आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट वेल. ठीक है. I think I can talk about specifically about my company. जैसे so I work in Gravy. If you have heard in the introduction enough, it might not be a big company. I see कि वो list में भी नहीं है उसकी, जो आपने अभी companies की list वगैरह में show किया था. Of course, understood. Uh, उस अच्छा, so थोड़ा और अगर मैं background दूँ, तो we hire people from EC, electrical, mechanical, and some biotech, and I think chemical as well now, है ना, CSE as well. There are a lot of guys working in Gravy from NIT Hamirpur. I think the count is about around 15 at the moment. Um, and the job profile that it offers is the profile of a research analyst, a patent research analyst. ठीक है. अब मैंने भी ये जॉब ज्वाइन करने से पहले कभी सुना नहीं था इसके बारे में, है ना. मुझे नहीं पता था कि पैटेंट्स क्या होते हैं, मतलब पता था चलो कि क्या होते हैं, बस एक हल्का सा आइडिया, बट आई हैड नो आइडिया कि एक पैटेंट रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है. सो इसके बाद इसमें ना एक एक बहुत ही अमेजिंग चीज ये है कि द स्किल्स दैट यू नीड टू वर्क इन दिस प्रोफाइल आर द स्किल्स दैट आर वेरी रॉ, वो आप लर्न नहीं करोगे, उसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगी. दिल कम टू यू. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी जस्ट नीड एनालिटिकल स्किल्स, राइट, कि बंदा थोड़ा एनालिटिकल सोचे. वी नीड कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. ठीक है. एंड वी नीड कि यू आर क्विक इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, राइट. सो अब आपको ये लगेगा यार ये तो फिर आप टेस्ट कैसे करोगे, है ना. दिस इज समथिंग लाइक, ये तो टेस्ट भी करना बहुत मुश्किल है, और हम कैसे तैयारी करें, किस चीज की प्रिपरेशन करें इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए. सो मेरे तरफ से उसके लिए कुछ टिप्स ये रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ईसी की बात करूं, अगर आप ईसी के हो, तो कोई भी टॉपिक उठा लो. जैसे फॉर एग्जांपल जीनर डायोड उठा लो. ठीक है. एक एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन, हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, हम जीनर डायोड की बात करते हैं कि यार एक हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, नॉर्मल डायोड है, और वो रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट करता है. ठीक है. अब पॉइंट इज कि हर कोई इतना ही आंसर देता है. ठीक है. बट अगर मैं किसी से पूछूं कि यार अच्छा, अगर ये हैवीली डोप्ड पी है या एन है, पी को हैवीली डोप किया है, एन को हैवीली डोप किया है, कोई कौन सा मटेरियल है जिसकी डोपिंग करी है ना. होल्स ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं. अगर आप होल्स बोलोगे तो मैं बोलूंगी व्हाट इफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, राइट. तो ओके, I'll answer this question I think in a while. So आपको ना ये क्वेश्चंस खुद से पूछने पड़ेंगे टू प्रूव कि यू हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, यू हैव दैट एनालिटिकल स्किल, है ना, एंड यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल. ठीक है.
मैंने इफ आई टॉक अबाउट मी पर्सनली, तो मैंने भी इस क्वेश्चन का कुछ खास आंसर नहीं दिया था, है ना। आई जस्ट सेड कि यार मे बी, मुझे जितना याद है कि आई थिंक अगर होल्स ज्यादा होंगे तो आई थिंक उनकी मोबिलिटी कम होगी, तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी डिवाइस की, है ना। जितना वॉट एवर आई न्यू, आई ट्राई टू स्टिक टू दैट, है ना। और जहां पे मैं मुझे लगता था कि नहीं ये मुझे नहीं आता, आई सेड नो, इतना मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट श्योर, है ना। इफ यू वांट आई कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, है ना। I'll then explain it to you. ठीक है। सो ये थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी अपने अंदर, हर टॉपिक पे जो टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके जाओगे एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाओ, है ना। एक सरफेस लेवल एनालिसिस से ज्यादा एक बार गूगल पे सर्च करके देखो कि डोपिंग किस चीज की होती है, मे बी उसी से वो एक लिंक भी पढ़ के जाओगे ना, यू विल बी गुड टू गो विद दैट टॉपिक, बस एक लिंक, राइट। ओके, सो आई वुड I wanted to look at the chat as well. Do you want me to answer the chat? Okay. Yes, sir, you can answer the questions in the chat. Okay. So I have one of the questions that I have is CTC important while sitting in placements? Is CTC important while sitting in placements? अच्छा यार, अब ये ना this is a matter of choice. ठीक है, this is a matter of choice. मैं आपको बताता हूँ, a lot of your seniors are right now in US. A lot of your seniors are maybe still in हमीरपुर, है ना। कुछ आपके कॉलेज में ही होंगे अभी भी, ठीक है। a lot of your seniors are in UK मे बी, और इन बैंगलोर और इन दिल्ली, ठीक है। मैं चंडीगढ़ में बैठा हुआ हूँ, है ना। सो ये सब ना चॉइस है, ठीक है। नेवर जज एनीबॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार वो यूएस नहीं गया तो मे बी वो शायद सक्सेसफुल नहीं होगा, वो हमीरपुर बैठा है, उसको कुछ और मिला नहीं होगा शायद इसलिए हमीरपुर बैठा है। ठीक है। यही सेम लॉजिक मैं आपको बोलूंगा कि यही सीटीसी में भी कहीं ना कहीं ट्राई टू थिंक ऑफ, है ना। इट विल बी अ चॉइस, जहां पे आप हो ना आपका सीटीसी वैसा होगा, ठीक है। अ, अब आपको ये देखना है कि आपका पहले तो आपने कुछ टेस्टों की तैयारी करनी है गवर्नमेंट, है ना। आपने एमबीए देना है, आपने गेट देना है, अगर वो सब है ना तो फिर मत बैठो, पता लिटरली एक आधी प्लेस मतलब बैठो, मे बी थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लो प्लेसमेंट्स में, बट इनको इग्नोर ही करो, है ना। अपने टारगेट अलग रखो, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू समबडी हु वांटेड टू गेट अ प्लेसमेंट, बिकॉज मेरे पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, कि मैं नहीं चाहता था कि मैं एमबीए का लोन लूं, है ना। मैं चाहता था कि मैं बस कॉलेज खत्म करूँ और मैं जॉब पे आऊं, है ना। सो यू आर टॉकिंग टू समबडी जो कि उस थॉट प्रोसेस से गया था। एंड आई हैड 3 प्लेसमेंट्स, आई थिंक मेरा एल्स्टॉम में प्लेसमेंट हुआ था, वो जो मेट्रो बनाती है, एक ये ग्रेवी में प्लेसमेंट हुआ था, एक लावा में प्लेसमेंट हुआ था जो फोन कंपनी थी उस टाइम पे। एल्स्टॉम वाज वांटेड अस, they had a 6 month like training program in Chennai, and they sent people to like I think UK after that. लावा में भी कुछ जापान में जाना था ट्रेनिंग के बाद आफ्टर 3-4 months, एंड ग्रेबी वाज द थर्ड कंपनी जिसमें चंडीगढ़ में रहना था, है ना। एंड आई वांटेड टू स्टे क्लोज टू माय होम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years, सो आई चोज ग्रेबी, राइट। तो उसका मेरा सीटीसी क्या था, मेरा इन हैंड उस टाइम पे ना मुझे 28,000 मिलता था। uh, और सीटीसी लगा लो कितना हुआ, 4.36 कुछ हुआ था कुछ बेनिफिट्स मिला के, राइट। एंड इट वाज द लोएस्ट पैकेज आई थिंक दैट आई चोज, लावा और उसमें से एल्स्टॉम में से, ठीक है। लावा एल्स्टॉम एंड ग्रेवी में से मैंने लोएस्ट सीटीसी चूज किया, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो मेरी प्रायोरिटी थी, है ना। सो मैं सजेस्ट भी आपको यही करूंगा कि थोड़ा सा उस डायरेक्शन में सोचो कि आपको क्या चाहिए, है ना, एंड देन गो फॉर इट, ठीक है। और एक्चुअली इस कंपनी में मैंने उनसे सीधे पूछा था कि यार मैं 5 साल के बाद कितनी अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे एक बार ये आइडिया जरूर दो कि आई शुड नो कि मैं कितना पहुंचूंगा, मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था अपने इंटरव्यू में बैठे बैठे, है ना। सो उन्होंने बोला कि आपके माइंड में क्या नंबर है, तो मैंने आई शेयर्ड अ नंबर विद देम, कहते हैं हाँ मिल जाएगा, इफ यू विल बी वर्किंग विल यू विल गेट इट, ठीक Yeah. है। एंड लेट मी आल्सो शेयर दैट आज मैं चंडीगढ़ ही आया हुआ हूँ, अभी मैं इसीलिए गाड़ी वाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं घर देख रहा हूँ। सो मुझे 5-6 साल हो गए हैं काम करते हुए, सो आई मैंने सिचुएशन जहाँ पे मैं अब घर लेने वाला हूँ चंडीगढ़ में, है ना। एक 70-80 लाख की गेम तो कर रहा हूँ मैं, Yes, sir. राइट। Yes, तो sir. है ना, तो Mm-hmm. अब मैं क्योंकि मैं एक प्लान था, आई आई हैड समथिंग इन माय माइंड कि यार 5 साल तक इतना पहुंचूंगा, अगर मैं चंडीगढ़ में बैठ के अगर पहुंच गया तो मेरे लिए सही है, इट विल वर्क फॉर मी, राइट। सो व्हाट विल वर्क फॉर यू, उसको देखो, ठीक है। सो दैट विल बी माय सजेशन आई थिंक फॉर दैट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay. uh, shall we go for initial CTC or the growth? uh, okay. ये ना एक एक मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ इसी से रिलेटेड, आई थिंक थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन ही है। जब ना आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है ना महीने की, कुछ जब आपको इन हैंड 1 लाख महीना शुरू में हो जाता है ना, उसके बाद आपको ये सब चीजें थोड़ा ना ज्यादा मैटर करने लग पड़ती है कि यार मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे मैं ग्रोथ भी देखूं, है ना, और कंपनी में भी माहौल अच्छा नहीं है ना, कुछ ट्रिप्स नहीं प्लान होते, यार वो वाली कंपनी तो ट्रिप भी दे रही है। ये सब ना बंदा तब देखना स्टार्ट करता है कि जब पहले हसल चलता रहता है कि यार मैं एटलीस्ट एक लेवल तक पहुंचूं, है ना। मे बी मैं एक जनरलाइज कर रहा हूँ, बट हाँ एक एक हल्का सा आप वो यू कैन गेट इन आइडिया कि 1 लाख एक महीने का जब क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो एक रेंज पहुंच जाती है आपकी। ठीक है। सो अच्छा, मेरा क्या सजेशन रहेगा, वो आपका जो एक मनी वाला फैक्टर है ना, उसको जरूर पूरा करो पहले। ठीक है। कैसे भी, है ना, कैसे भी, इफ इट्स थ्रू लर्निंग, इफ इट्स थ्रू ग्रिलिंग, इफ इट्स थ्रू, अगर आपको इजीली मिल रहा है, अगर आप अमेजोन में प्लेस हो रहे हो, तो भी आई थिंक आपका इन हैंड स्टार्टिंग ही आपका 120 तक हो जाएगा, है ना। बाकी तो वर्क्स वगैरह रहते हैं, बट इन हैंड सैलरी आई थिंक इतनी सी रहती है, एक 15 एक 20 तक, है ना। सो बीट दैट, है ना, कि अभी मेहनत कर लो और मैं एक 15-20 वहां ले लूँ और दिन में देखूं, है ना, कुछ भी। मेरे हिसाब से आजकल मार्केट में, आपको जॉब मार्केट में ना अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। ठीक है। सो ये आप बोल सकते हो, अगर आपको आपकी प्रिपरेशन है ना, नेवर फेयर यार ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। ठीक है। जस्ट गो फॉर इट, कीप एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज। और चाहे वो इनिशियल सीटीसी हो, चाहे ग्रोथ हो, शुरू शुरू में मैं बोलूंगा कि एक वो बस एक मनी वाला एक जो आपका माइंड में है ना, वो जरूर माइंड में लेके चलो कि मैं कब तक पहुंचूंगा, कितने सालों में पहुंचूंगा, कि जिस भी कंपनी में जा रहे हो उसमें जाके, है ना। उसके बाद अ, अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक वर्क कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। मेरी कंपनी में काफी अच्छा एक वर्क वर्क कल्चर है कि हम वर्कशॉप्स होते रहती हैं, हर हफ्ते हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, और हर हफ्ते जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से लेके अब तक हर हफ्ते कुछ ना कुछ सिखाया जाता है ना, बेस्ड अपॉन द लेवल दैट यू आर करंटली एट। ठीक है। एनुअल ट्रिप्स वगैरह चलते रहते हैं, कुछ बर्थडे पार्टीज वगैरह, है ना, हर कंपनीज में आपको मिलेंगी, मोस्टली मेरी कंपनी में भी होती हैं। ना आई एम अ गाय जिसको मे बी इस चीज का ना इतना नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है। क्यों? मेरे फ्रेंड्स अभी भी वही हैं जो मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स थे। आई हैव केप्ट माई प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट एंड माई पर्सनल लाइफ इज सेपरेट। ठीक है। वर्क Yes. कल्चर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि अगर शायद वो ना हो, मुझे नहीं पता मैं कैसे सरवाइव करता या कैसे इस चीज को मैं बैलेंस बना के चलता, है ना। हो सकता है वो मेरे लिए टू मच टॉक्सिक हो जाता कि सिर्फ काम ही काम की बातें होती हैं, है ना। बट लेट मी जस्ट शेयर इट इन अ वे कि अच्छा, आजकल ना देखो, हमारी एज ग्रुप के सारे बच्चे जाएंगे, ठीक है, आपके साथ ही कुछ बच्चे प्लेस होंगे इधर उधर के कॉलेजेस से, जो आपके सीनियर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी पाथ से गुजरे हैं। ठीक है। तो ना वो बॉन्डिंग किसी ना हर किसी ना के साथ ना आपकी बनी जाती है। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ना, इफ द वर्क इज नॉट टू स्ट्रेसफुल, कंपनीज लाइक ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही एम्प्लॉय फ्रेंडली कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट देयर ना, यू विल बी फाइन, है ना। ठीक है। Yes. क्योंकि क्योंकि अगेन हमारे पास जितना भी वर्क फोर्स फोर्स है ना, वो आपको मे बी आपके मैनेजर्स भी 30s में मिलेंगे, अर्ली 30s में। ऐसा नहीं है कि 45 ईयर्स वाले बंदे आपको मिलेंगे इन कंपनीज के अंदर, बहुत ही लाइक रेयर, है ना। मैं अगेन पीएसयूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये ईसी सीएससी वाली जो अपनी प्रोफाइल्स रहती है इनके अंदर। ठीक है। तो वर्क कल्चर डेफिनेटली इट प्लेज अ रोल, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइसेस। ठीक है। And yes. एनीथिंग एल्स, कुछ कुछ अगर आपकी तरफ से इनपुट्स आएंगे, आई थिंक आई बी एबल टू मे बी प्रोवाइड बेटर insights on things. If Bill, if you can share some of the things that are in your head right now. Yes, so sir, being a sophomore, more like what type of preparation can we do to crack a placement like from now onwards? Yeah, other question might be like this way also, like when should we start for placements? Okay. Hmm. um if you have a company in your mind ना, फिर तो I think if you know कि मुझे इसी कंपनी में जाना है, so the moment you know it, the moment you start preparing for it, है ना, it should be the moment you start preparing for it.
आप ग्लास डोर पे देखो उस कंपनी को, उसके इंटरव्यूज के रिलेटेड रिव्यूज चेक करो, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पोस्ट किए होते हैं हर किसी ने कि क्या क्या पूछे जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड वे टू टू जज अ कंपनी, है ना। इनफैक्ट उनके एम्प्लॉयज भी उन पे रिव्यूज देते हैं, बट ज्यादातर जिन्होंने छोड़े होते हैं वही रिव्यू देते हैं तो वो थोड़े थोड़े बायस भी रहते हैं, है ना। बट एनी हाउ इट विल गिव यू गुड पिक्चर ऑफ थिंग्स, है ना। आई थिंक आई क्लिक्ड समवेयर एल्स। ओके, आई एम बैक नाउ। बट ग्लासडोर इज वन थिंग जहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये सब, है ना। और अगर आप बोलो कि फाइनल ईयर में घुस गए हैं, अब अभी प्लेसमेंट वाला स्टार्ट हो रहा है, सॉरी फाइल ओनली, ओके, सॉरी, sorry for the interruption, I'm back again. Yes. So अच्छा, आई थिंक प्रिपरेशन ना आपकी वैसे तो जब फाइनल ईयर में हो ना तो स्टार्ट इट शुड स्टार्ट, ठीक है। Yes. बट एक एक जैसे अभी आप एक सेशंस ले रहे हो, है ना। एक सबसे अच्छा ना झटका जब लगता है ना, मे बी अगर आप किसी से रिजेक्ट हो जाओ ना इंटरव्यू से आई थिंक दैट्स द मोमेंट जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है कि यार हुआ क्या उसमें, है ना। मैं कहाँ रिजेक्ट हुआ, क्यों रिजेक्ट हुआ। मे बी इट्स गुड टू टेक फीडबैक एज वेल। डायरेक्टली इंटरव्यूअर से पूछ लो अगर आपको लग गया ना बैठे बैठे कि यार मैंने नहीं, थोड़ा सा मे बी मैसअप हो गया मुझसे ना। फिर भी अगर आपको जब इंटरव्यू खत्म हुआ है ना, उस टाइम पे उनसे पूछने की कोशिश करो कि कैन यू गाइड मी फॉर लाइक समथिंग, कैन यू गिव मी सम शेयर सम फीडबैक विद मी पर्टिकुलरली, है ना। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछो कि यार आई वाज वेरी नर्वस, मे बी मेरी मे बी माय कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड, ठीक है। या आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और उसी पे हमारा ज्यादा इंटरव्यू चलता रहा तो मैं आई गॉट नर्वस अबाउट इट। तो अगर आप इस तरीके से पूछोगे ना, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे इंटरव्यूअर को, तो आपको एक बेटर आंसर भी मिलेगा फीडबैक का, है ना। दैट इज अ वेरी गुड वे टू एक्चुअली इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना, क्योंकि उससे आपको आपकी शॉर्टकमिंग्स का पता लगेगा। मैंने ये किया था, मैं आई थिंक 5-6 आईटी कंपनी से रिजेक्ट हुआ था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। अगेन क्योंकि इसी वाले हैं हम, सो वी ऑल डू दिस, है ना, कि हम प्रिपेयर करेंगे। आई यूज्ड टू क्लियर दी रिटन राउंड्स एंड ऑल, और इंटरव्यू में बैठ के दे वर लाइक कि जावा का ये बता दो। मैंने कहा सर जावा नहीं पढ़ी है यार, सी सी प्लस प्लस से पूछ लो पूछना तो है ना। आई हैड नो आइडिया अबाउट थिंग्स एंड वो, बट अगेन यही सब ऐसे से इंटरव्यू चलते रहते थे। बट स्टिल आई ऑलवेज यूज्ड टू कंटिन्यू माय हसल कि यार मैं हर बार इंप्रूव करूं। मैंने अल्टीमेटली जावा भी पढ़ ली, पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि मैं पूछता जा रहा था उनसे, देवर लाइक कि नहीं यार हमें तो चाहिए, है ना। आपको सिर्फ सी सी प्लस प्लस पे आप कोई भी कंपनी आपको नहीं रखेगी, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो आई गॉट टू नो कि यार जावा पढ़ना पड़ेगा मेरे को भी थोड़ा, है ना, सिंटेक्स वगैरह से फेमिलियर होना पड़ेगा। सो बेस्ट वे टू लर्न इज कि आप अपने इंटरव्यूअर से ही एक फीडबैक जरूर लो, है Okay, so ना। एंड आई होप यू गॉट द आंसर कि यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई थिंक द मोमेंट यू नो कि आपको इस कंपनी के लिए जाना है ना। हाँ जी। so और ऐसा हम्म। नहीं भी पता होता, आई थिंक ये भी ना थोड़ा एक वो होता है कि ये बाहर कोई बोलता है कि चूज व्हाट यू लव, चूज गो फॉर योर पैशन एंड ऑल, है ना। बट ये नहीं पता yes. होता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। आई विल नॉट से दिस, ठीक है, आई विल नॉट सजेस्ट दिस टू एनीवन, ठीक है, क्योंकि उससे तो बहुत ही ज्यादा कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आई विल से कि look at the work profile. If it gives you a kick ना, go for it. Ignore everything else. वो काम जो आप करने वाले हो ना, अगर आपको लग रहा है कि वो बेनिफिशियल रहने वाला है ना, तो go for it, ठीक है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सही। फिर आप उस पे ले सकते हो। बाकी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस हर किसी को करना पड़ता है यार, हर जॉब में। एक इट्स नॉट गोइंग टू बी मे बी अ वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ फ्लावर्स जहाँ पे आपको बस रोजेस के फ्रेग्रेंसेस ही मिल रहे हैं हर जगह you'll have अगर रोज भी है तो उसके साथ आपको थॉर्न्स भी मिलेंगे। Cool. हाँ जी, हाँ जी। Yes. So Okay, how much importance? I have another question. How much importance is of internship experience and placements? Is it really important? I don't think so. For me personally, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ कंपनीज में इंटरव्यू देने का और इतने साल इंटरव्यूज लेने का, as long as you know what you did in that internship well, है ना, so I think that is what is important. uh, Otherwise इसको कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। इवन इफ यू हैव डन मे बी सम इंटर्नशिप इन गूगल, और अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसको आप आंसर नहीं कर पा रहे हो ना,
so that interviews internship means nothing. Trust me. है ना? So आपको all that matters is कि अगर आपने कुछ किया है तो you should be able to answer things about it. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट लाइक फॉर लाइक बताया आपने सही से, काफ़ी सही लगा। काफ़ी लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस में लाइक पता चल जाता है कि कैसे क्या करना है, ऐसे तो फिर लगता है उसकी प्रिपेयर करो उसके बाद करो। यस सर। हाँ नहीं बिल्कुल, अभी आई थिंक हम थोड़ा ना जनरली बात कर रहे हैं। इफ हाँ ऑफ जी। कोर्स मैं अगर एक ब्रांच वाइज बात करूंगा है ना, या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे तो आई बी एबल, आई एम श्योर आई बी एबल टू गिव यू मे बी बेटर इनपुट्स, है ना? बट एनी हाउ आई थिंक फॉर नाउ दिस शुड बी गुड फॉर अ स्टार्ट, है ना? यस सर, यस सर। Yes, sir. थैंक्स अ लॉट सर। वी आर ओके, ग्रेटफुल टू हैव यू। ओके सर, ओके। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच गाइस, गुड टू बी हियर। Thank you, sir. Thank you for your time, sir. थैंक यू। What cannot be learned through education, training, and observation is learned by experience. And learning through experience is the hardest and the best. For experience is not inherited but earned. So let's call upon Mr. Sahil Gar to share his views on college placements. गुड इवनिंग Hi सर। guys, am I audible? Yes, sir, you are यस right. सर। Yeah. So very good evening to one and all present here. First of all, can I just ask which year students are here? Like third year Se- students, final year students, फर्स्ट, Second सेकंड is एंड थर्ड सर। and like how many students from each year? Basically sir, the majority is from first year and second year। Majority is from first year and second year. That's great. That's यस। great. So first of all, a little introduction about myself. My name is Sahil, and for the past 3 years, I've been working with IOCL, that is Internal Corporation Limited, as an engineer. So basically, what I do is I construct fueling stations. That is in common language that you call petrol pumps. So that is what I do, and I look after their maintenance and development of the new ones. So this is what I do, and uh, as far as I think this session is about placements, as you call it, but I did not sit for any of the placements in college because I was preparing for GATE. I'm from civil engineering background, that's why. Um, I did an internship at L&T at the end of third year, and after that, I started preparing for GATE. So I don't think I'm the right person to, talk about placements as such, college placements as such. But as far as interviews are concerned, I did appear for interviews after clearing GATE and for PSUs. So I did appear, sit in a few interviews, and I can definitely talk about that. First of all, while being in college, since there are first and second year students, I think it is very important for people to understand that there's a lot of talk around the internet and everything, social media and everything, about finding your passion and finding what you like. So it sounds like a cliche, but it is actually the truth. After a few years, when you start working in the industry, you tend to uh, go in that direction that if you're working on something that you find interesting, not exactly your passion, maybe your passion is something else or you don't know about that. Even I don't know about my passion right now. So if you're working on something that you find interesting, it becomes a lot easier to work. uh, and you don't get frustrated after coming back from a long day. So that is, I think, something that people from first year and second year should really really uh, get into. Apart from that, I think you should not limit yourself from the opportunities to the opportunities that you're getting in college, because the world is so opened up right now, because of the COVID situation. Everything that you can learn from a college degree or an MBA degree or whatever it is everything is there online. So what my suggestion would be, do not limit yourself to your college, and look outside, talk to people who are working in the industry, make connections, make a network, and open your eyes and arms to
the opportunities that are there outside. If you look at it, I think an Instagram influencer today earns more than anyone who is working at Google or Amazon or whatever. If you're, for example, like somebody has a 1 million followers today, probably earns like 12 lakh rupees a month. So that is the kind of opportunities that are there outside. I've just given a very random example about it, but like that is the truth today. So the focus, I think there were a lot of questions regarding whether you should choose a CTC, a higher CTC, or something where you can learn a lot. I think from the age of like 19 to 25 or 27, you should definitely focus on developing your skills. That is what is going to help you. Like you all must have seen that movie Three Idiots, and it talks about how people will run after you if you have the right skills, and it is actually the truth, because if you have developed all those skills which are relevant to the industry, people will run after you, and you will get the jobs easily. Because there's in India right now there is a lack of uh, people who are skilled from the industry point of view. So if you are if you have the required skills, you have the right mindset, people are there to hire you. So you don't have to worry about that. So the focus always, right from first year, whether you're second year or third year, it has to be on, or even if you have started working, your first year of job or second year of job, the focus has to be on improving your skills and developing yourself, and keep adding to your profile. And you will find opportunities, a lot more opportunities than you would not have thought of initially. So that is what my advice would be. Apart from that, I think as far as our college is concerned, from when I was there, 2014-18, the culture was a little different. I think now when I look at it from hindsight, it's the culture needs to improve. That's what my understanding is, because a lot of the clubs and the teams that are there in the college, they are not that helpful in developing those kind of skills in individuals which are required at the industry level. So people generally, when they go to college, they are very bullish about joining the teams and you know becoming part of clubs. But you should really decide for yourself whether it is really helping you out or not. Maybe you can try it for a month or two and see if it's helping or not, because it's better to do something productive rather than wasting your time in a team where you don't get any opportunity to learn something, or you're not developing your personality or something. So uh, be very choosy about that, and don't follow the herd. If your friend is going to Pixanoids, or someone else is joining another team, it doesn't matter. If you don't find it useful for yourself, then just don't go for it, and use your time somewhere else. Time is a very important thing, and you should respect it. You only have 24 hours in a day, and you should utilize it properly. And that is what my advice would be. A lot of us end up wasting a lot of time, and to that I would also like to add is, when you're having fun with your friends, that is also a good utilization of time, because when you hang out with your friends, you develop a lot of qualities that are required at the industry level. Because basically you will have to deal with humans everywhere. So and these are the kind of people you will find everywhere. So if you don't know how to be with people and talk to people and strike a conversation, so that if you can learn by hanging out with your friends or working in teams, that is going to help you in your career as well. So that is also a good utilization of time. But don't waste your time doing unproductive stuff, and try to manage it. uh, Apart from that, Yes, so related to what you are saying, I have one question from the thing that do joining any technical club in college helps in getting placement, or joining any cultural club creates a problem in getting one? okay, I think that's a very good question. First of all, I think joining the club does not help. It definitely just reflects in the CV that you have joined a club, but what you did over there, that is what really helps you in the long run.
You might get placed at a company, say in your final year, because you have 10 things listed on your CV. But if you don't have it in your personality, it will show up within a year or two. And people will realize that when you go into the industry, because there is no, blanket over there. You are just open out there, and you can't hide from the reality when you go out in the world. You can hide it in college, but you can't hide it in the industry. So Yes. that is what is there. That is what my previous point was. When you join a club or something, you should definitely look at it from an objective point of view, whether it is really helping you or not. A good way probably to look at it is, if you are afraid of something and the clubs you have joined helps you in removing that fear or overcoming that fear, whether it is talking to people or marketing or financing or whatever it is, organizing stuff. So if it helps you in developing those skills towards that, then it's great. Or you might want to go to a club just to create your network, know people. So that is also fine, but you should have a clear motive why you're joining and whether it really helps you or not. That is what my advice would be. And how many people are there from civil engineering, civil, electrical, mechanical? Sir, we don't have the number, but like it's mixed Correct. something like people are All watching on right. But YouTube. people are there from civil, right? Yes, sir, there are. Okay. Okay. So one more So question. yeah, Any advice for someone who wants to prepare for competitive exam and go for higher studies? my advice would be, if you're planning to go for MS, that is Masters of Science, or MTech in India. Outside it is called MS. In India, usually it is called MTech. So my advice would be just go straight after college. Don't wait for a year or two or in the industry. Go after college, and if you really want to experience what it is like to work in the industry, then maybe go for a job for a year or two and then go for MS or MTech. But if you get an opportunity right from college to appear to go for a master's degree, then definitely go for it. But if you're planning to go for an MBA, then usually that's what the general consensus is around the industry. You go for uh, little work experience, probably somewhere around 2 to 3 years if you are planning to go for IIMs, and a little more than 3 years, 3 to 5 years if you are planning to go for abroad business schools or ISB or something else. So that is what the general consensus is, and that is what is required also, because an MBA degree is not only a career decision; it's also a financial decision. So it's expensive, and you got to think like that. And when you've worked somewhere, then you know what you want out of your MBA degree. So that is something that you should keep in mind. And MS, I would also suggest that for core branches, if someone is not looking to, not seeing himself or herself working in the core industry in the long run, then you can join a job right out of college. And it may be a general job like an analyst, business analytics, or maybe a tech job as well. But join a job, work for a couple of years, and then try to figure out where you want to go. Because uh, if you don't see yourself working in the tech industry, then I think MBA is one of the very good options that you can use to switch industries. If you want to work in the tech industry in the core fields like civil, mechanical, or electrical, if you want to work in the technical side of things, then, or even for CS, IT, and EC branches, then what I would suggest is, there are two options that I think you can take. If you're getting a good enough job where the opportunities to learn and grow your skills are there, and you think that it will help you in developing yourself, then definitely go for the job. And then if you feel like going for masters, and then you should go for that. But if you somehow don't end up getting a job, then also have an option for going for an MS, especially you don't especially in the case when you don't have to do a job after college, because some people do need to do that. uh,
because they come from different backgrounds. Uh, so accordingly, you can make a decision. Okay, so one question from the civil audience, like honest advice for them, like what are the important subjects for civil engineering for placements and gate also? Civil engineering, I think if you're looking to join the core civil engineering jobs, I think structural analysis and strength of materials and knowing about the properties of various materials and all, these are all the main subjects. And basically, what is the crux is whatever you have studied, whether you have understood that or not. That is what people are looking for, and whether you're open, whether your mind is open enough to uh, try to understand what you don't know, whether you're curious enough, and to try and understand what it is. So that is what people are looking for. Nobody expects you to know everything right out of college. uh, yeah, so that would be it. Okay, so So like Another an point, on both, would both be like some people were asking like how to find what you want to do. Like one good thing that you can do is, especially for the first year and the second year students, is try to do as many internships as possible, because that opens you up to a lot of things that you would never get to know in college. uh, do not think that internships are only possible after second year or after third year. It's not like that right now. Earlier it used to be like that. People did not hire interns who were freshers, but now it's completely different. You can even do it while doing your semester studies as well, because most of the internships, especially in the tech industry, are online and you can do it anytime you want. So try to do as many internships, different types of internships in different fields that you're interested in, so that you can know which industry or which field really excites you or you find it interesting, and then you can kind of build upon that. Any other yes. questions? Yeah. So like, do our gate scores have any say in the placements? Gate scores, as far as the criteria is concerned, the private industry doesn't have any criteria for gate scores, as far as I know. Only the IITs and a few other institutions take gate scores as for admissions to MTech degree, master's degree, and some of the PSUs use gate scores for placements or for hiring people. But these PSUs also hire directly from college, so that is not a necessity. But I don't think NIT Hamirpur, a lot of PSUs are visiting, because probably because of the location or something else. Uh, so they use gate scores for hiring PSUs. But as if you have a good gate score, it basically shows that you you understand your subjects well, because it's a technical test. So it basically shows, it's always good to have a good gate score in your CV. It's not something that is required. It's not something that is required, but it's good to have it. So like what salary growth does PSUs have? Like, So to tell you the reality, first of all, I would like to touch upon the culture that is there in PSUs, right? So a lot of people ask me about that, like what is the how does work happen over there, and what is the difference between the private industry and PSUs. So right now what is happening is, it really depends on your profile. If you're say working in a marketing department, so you're probably the work profile will be very hectic, and it is not a typical government job that you expect, or that you might be expecting. It's not like that. It's pretty hectic, and you will have to work on Saturdays and Sundays. The work culture, you might not find it very friendly. So but the people are very helpful everywhere. So that is one thing that I've observed in my PSU. People are very helpful, and the flexibility is there. But if you're planning to join a PSU, what I would suggest is, if you want to stay in a PSU, then only join a PSU. Otherwise, I would urge you all to explore other opportunities, because uh,
as I have experienced as well, it's not very easy to just leave a PSU and do something else. It becomes difficult after some time. Initially, you can do that. Later on, becomes a little bit difficult because you have other responsibilities as well. So a lot of people have a general consensus in mechanical and especially in civil engineering is that gate is the only option to get a good job and all of that. But uh, it can become something that you don't want. Even if you get a good gate score and you go to a PS, you might find yourself not very happy about it. So it's not only about what which company pays more. uh, it's also about what your personal preferences are and what you like to do and what kind of environment you like to work in. So make an informed decision about that. I wasn't informed about what the work culture was in PSUs, to be very honest, and I had just seen what it was in L&T, and I basically decided that I didn't want to go there. So that is why I prepared for GATE and wanted to join a PSU. But yeah, so you talk to people who are working where you want to go, and make an informed decision accordingly, and that would be my advice. Yes, sir. Thank you, sir. Like these doubts for being honest, like core students were having lot of doubts that you cleared. Thanks a lot, sir. Any other questions? I would be happy to help. No, sir. Like for now, that's all. Yeah. Thank you so for sharing your experience. I'm sure that students have taken notes of this. Thank you so much. Thank you Thank you. so. Thanks a Thank lot, you. sir. Yes. Learning is definitely not mere imitation, nor is the ability to accumulate and regurgitate fixed knowledge. So let's welcome our next guest speaker, Mr. Ritik Goyal, to invite us to give us insights about the placements. Good evening, sir. Good evening, Ritik sir. I guess Ritik sir can't hear us right now. Hmm. So I think you all are happy to like get all your answers cleared, basics on not only on IT side or like also on the core side. So there are a lot of students who were aiming like मेरे को कोडिंग नहीं करनी है तो मैं क्या करूँ. सो कोर साइड के क्वेश्चंस भी आई होप लाइक सबके सॉल्व हो गए होंगे. तो जैसे साहिल सर ने बताया. सो ऋतिक सर ज्वाइन करेंगे लाइक सिर्फ कुछ सेकंड्स में. अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक अंकुश सर भी आए थे. लाइक उनका एक्सपीरियंस भी आपको सही लगा होगा. लाइक काइंड ऑफ चिल वाइब. ऑल्सो अगर आपका कोई भी डाउट लाइक बाद में होगा लाइक यू कैन ऑलवेज पुट इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन एंड वी विल take them later also. So if you have any doubts pending even like for the core side, you can drop them in the comment section and we'll take them later. Hello, am I audible? Yes sir, you're audible. Good evening sir. Okay, okay. Good evening. Good evening to my seniors and good evening to all. And as there are students from, I think majority are from first and second year.
So at this Mhm. stage, I will say that seniors connection are very important. So this is very much required. Like Yes, sir. you have so much uh, stress, or you don't have to take so much stress about placements right now. And I'll start with the introduction. Myself, Ritik Kumar Goyal, and currently I'm employed in NTPC as an executive engineer. And with 2020 itself, through college, uh, with GATE. And my job is actually in operation and maintenance. It basically um, requires all the mm, core sector specifications for generator parts. For like I'm in maintenance, so I do the work for general uh, generator maintenance or electrical parts, switch yards, and all that electrical stuff. Actually, we do study a very less. There is a very much in practical, but so this is my introduction. And first of all, I want to know that are there students from other branches or from only electrical or in civil, and some other branches are also here. So students from all the branches are here, like every branch. Yes. So I would like to clear that actually I have decided in my second year that I want to go for a course sector, and I have done my internships related to that, or I have been in placements related to that. So that is very much important for you guys. Just decide that if with which sector you want to go, whether it is an IT or it is a core. First of all, मतलब this is very much necessary. अगर आप कोर में जाना चाहते हैं तो देन इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू, और इट वुड बी वेरी मच ईजी। और अगर आप आईटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपकी प्रिपरेशन उसके हिसाब से होगी। सो मैं कोर की तरफ था, मतलब मेरे को कोर का ही था मेरे दिमाग में। और with seniors help, actually there is a lack of motivation, but if you have seniors around you, like Sahil sir was there. Actually they didn't know me, but at that time they scored a very matlab, they actually cleared the gate with the college itself, so it motivates the juniors, so that helps me. Or there are many seniors that I have been in contact with, which are into preparation phase for core and PSE and some. So that's why. So for the core sector, or as I had been in placements for so many companies for core, like BrahMos Aerospace, which was a missile company with a joint venture with Russia. And so the I will share my interview experience, which really helps you guys. Mm, I have been in Signal Chip, which is a semiconductor company, and also in HPCL, and with the college placements, not with the gate. So at that time, these companies are actually there, and I was lucky to have. So विद द मतलब इंटर्नशिप्स का है कि इंटर्नशिप्स हाँ ज़रूरी रहती हैं अगर आपका सेक्टर क्लियर है। तो जैसे अगर आप कोर सेक्टर में इंटर्नशिप कर रहे हो और आप आईटी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो देर इज़ नॉट मच रिलेवेंस। अगर आपका सेक्टर आईटी है और अगर आप आईटी में इंटर्नशिप कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी मच गुड, और दे एक्चुअली इट हेल्प्स। सो मैंने इस कोर सेक्टर में इंटर्नशिप करी थी, लाइक इन रील सम semiconductor solar power company, and also in substation. So that helps me in my core sector companies. In BrahMos, there are a lot of questions from core. So for you guys, मतलब particularly for first and second year guys, I'll say that just stick to, अगर आपको core sector में जाना है तो सबसे पहले देखिए कि आगे ग्रोथ क्या है कोर में, कि मतलब कंपनियां वहाँ पे हैं, मतलब देर आर कंपनीज दैट यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन, और आर देयर नॉट, मतलब अगर कॉलेज में कंपनियां ही नहीं आ रही हैं कोर की और आप सब कोर कोर में जाना चाह रहे हैं तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब आपकी खुद के लिए। तो पहले देखिए फ्यूचर ग्रोथ क्या है, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से आपका खुद का मतलब किस तरफ है, तो उसके हिसाब से माइंड सेट बना के फिर अगर आप कोर में जाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आप अपना
केवल और केवल अपनी स्टडी करिए, जो रेगुलर स्टडी है, नॉट सो मच। हाँ, अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। और अबाउट क्लब्स, दैट मेरे साथ भी हुआ था ऐसा गलती कि क्लब्स में क्या होता है कि हम सारे क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब ये भी कर लो वो भी कर लो, क्योंकि सब लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली क्लब्स ज्वाइन करने का एक ही पर्पस होता है कि वो टीम वर्क अपना शो कराता है, कि हाँ हम एक फेमिलियर हो जाते हैं इन्वायरमेंट से जिसमें टीम वर्क हो रहा होता है, तो दैट इज़ मच मच नेसेसरी। और अगर आप में लीडरशिप है तो वो मतलब वो ऑलरेडी मतलब है, मतलब वो आपको अलग से उसको गेन करने का नीड नहीं है, वो शो होगा। और तो आप एक अगर एक क्लब ही जॉइन करके बैठे हैं तो वो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब इतने क्लब जॉइन हो गए थे मेरे से कि मैं छोड़ना पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा ऐसे इधर उधर के। तो कोई एक अच्छा सा कोई देख लीजिए क्लब, जो भी ठीक हो, जो भी आपकी हम्म, एक्सपर्टीज से मिले, तो वो आपको एक टीम वर्क दिखा देगा कि हाँ मतलब टीम में ऐसे ऐसे काम होता है, तो वो हेल्प करता है। कोई भी जो भी आपकी मर्जी हो, वो बस टीम वर्क के लिए होता है। क्लब्स आर नॉट फॉर योर दैट मच लर्निंग और दैट मच। और कोर की डिमांड है या आईटी की, हाँ तो वो तो आपको पता करना है ना, कि मतलब मेरे को कोर में जाना है, वैसे डिमांड आईटी की है, ये तो दिख ही रहा है। लाइक तो सर वैसे लाइक कोर में लाइक कौन सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉमिसिंग है फ्यूचर में? कोर में लाइक जैसे किस साइड में कोर के जाना रिन्यूएबल चाहिए एनर्जी, लाइक? यस। रिन्यूएबल ग्रोथ है, मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना आइडिया नहीं होता, तो हम हाइपोथेटिकल थिंकिंग करते हैं। लाइक हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है तो हम ऐसी ऐसी कंपनियां देखेंगे, टेस्ला लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे कोई है तो उधर जाना चाहेंगे, तो ऐसा रियल मार्केट में यस। नहीं होता। दे डोंट हायर यू जस्ट पीपल फ्रॉम कॉलेज, फॉर दैट यू हैव टू बी इन मास्टर्स एंड दैट प्ले। सो लाइक रिन्यूएबल्स में इलेक्ट्रिकल का स्कोप है, तो जो कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल्स के लिए आती हैं, जो सोलर विंड वगैरह के लिए आपके लिए हेल्प करती हैं, तो वो बहुत अच्छी है, उसमें आप जा सकते हैं। जिसमें क्वेश्चन है व्हेन And शुड वी sir, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स। सॉरी, हाँ बोलिए प्लाक्षा। what are the future scope in electrical corporate sector? Like corporate sector में देखो मैं अपना जर्नी बताऊँ थोड़ा सा, मतलब मेरा प्लेसमेंट्स हुआ था ओरिएंट में, जो कि कोर है हमारी इलेक्ट्रिकल की। तो यस सर। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूँ तो एक्चुअली इन द कोरोना टाइम दे रिवोक्ड माई प्लेसमेंट्स, सो आई वॉज जॉबलेस। तो इलेक्ट्रिकल कोर सेक्टर इज़ वेरी मच डिमिनिशिंग, विल से, मतलब नॉट दैट मच ग्रेट और अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिस्टिक। तो सो लाइक अगर किसी को इंटरेस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल कोर में है, उस वजह से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हो, तो लाइक उसे क्या करना चाहिए फिर? लाइक आईटी साइड उसका इंटरेस्ट नहीं है और वो इंजीनियरिंग करने आया लाइक कोर ब्रांचेस में, तो हाँ मतलब जैसे हमारा क्लास का मेजर थिंकिंग यही था, मैं रियलिटी हम्म, बताऊँ तो हमारा क्लास का मेजर थिंकिंग यही था कि सब कोर कोर में जाना चाहते थे। बट देर आर 2 और 3 कंपनीज लाइक ओरिएंट, टाटा पावर, और बाकी तो ये एचपीसीएल और ये पीएसयू थी, जो मतलब जिन्होंने कट ऑफ वगैरह क्लियर की थी, तो उसमें ज़्यादा लोग बैठते नहीं थे, वो कुछ ही टॉपर्स वगैरह के लिए थी बस, ब्राह्मोस वगैरह, तो इसलिए। हम्म, तो कोर कोर के लिए सब करते रहे, बट उतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो सब लोग जा नहीं सकते, वो हायर कितना करेंगी, 4 या 5 या 6 या 9, तो बाकी बचे यस फिर सर। आईटी में जाना चाहेंगे। तो आप अभी से मतलब एक परसेप्शन बना लीजिए, अगर आपको कोर में पर्टिकुलरली जाना है तो इलेक्ट्रिकल में देर आर नॉट सो मच ऑप्शंस, और ऑप्शंस हैं तो वो मास्टर्स करके होंगे फिर, क्योंकि वो आप मास्टर्स करेंगे विद आईआईटी और सम आउटसाइड इंडिया, तो उसमें यस। ऑप्शंस होंगे मिलेंगे आपको। देर आर सो मच कंपनी, एल्स्टॉम, एबीबी, और सही सीमंस ऑल्सो, सो यस मच सर। यस। कंपनीज इन दैट। क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि वो कंप्यूटरिंग के साथ इलेक्ट्रिकल होती है, अभी कॉलेज में हमारा केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, तो वो रिक्वायर इतना मच इंडस्ट्रियली रिक्वायर ही नहीं है, तो इसीलिए आईटी सेक्टर के लिए मतलब है ग्रोथ। और अगर आपको पीएसयू के लिए ही जाना है पर्टिकुलरली, तो हाँ देर आर ऑप्शंस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके लिए आपको गेट रिक्वायर चाहिए। सर लाइक उनमें क्या क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक इंटरव्यू में? लाइक बेसिकली कोर बेस्ड जो कंपनीज आती हैं, लाइक आईटी बेस्ड तो अलग होता है, लाइक कोर बेस्ड क्या आपसे डिमांड करती है, क्या चाहिए उसको बंदे में? लाइक
I'll share my experience for Orient. As actually, I was preparing for GATE. So when you prepare for GATE, the core companies that come in came to college, और उनका इंटरव्यू बहुत ईजी लगता है फिर, क्योंकि आप गेट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम बेसिक, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक पावर सिस्टम, दैट्स ऑल। आप क्लियरली कह दीजिए कि मेरा फील्ड ऑफ सब्जेक्ट्स या मेरा इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है पावर सिस्टम या मशीन, तो उसमें आप प्रिपेयर करिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन। तो आप अगर जब बेसिक बेसिक क्लियर होगा तो बस वही पूछती हैं। थोड़ा बेटर कंपनी, बेटर पैकेज के लिए जाएंगे लाइक ब्रह्मोस और ये सब, तो वो आपको हम्म, ऑल ओवर एरिया पूछेंगे कोर के। लाइक ब्रह्मोस का इंटरव्यू, आई हैड इंटरव्यू फॉर 1 hour एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम वन सब्जेक्ट, एंड उन्होंने सारा सारा सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिया, मतलब डिजिटल, एनालॉग, मतलब एक ही सब्जेक्ट नहीं छोड़ा मेरे से बिना पूछे। तो सब कुछ पूछती हैं वो, yes sir. मतलब एकदम डेप्थ कंसेप्ट्स आपको रियली मतलब रिक्वायर। और हम्म, जैसे फीडबैक होता है ना, तो हाँ, कहीं न कहीं मेरे से गलती हो रहा था, तो आई आस्क्ड फॉर फीडबैक, बट जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो जनरली दे डोंट प्रोवाइड यू विद फीडबैक, दे डोंट गिव यू फीडबैक। सो यू हैव टू फाइंड इट विद योर ओन, कहाँ आपकी yes. गलतियाँ हो रही। मेजरली जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटरव्यू के लिए और वो सब के लिए, तो वो सब यही है कि आपको अपना इतना भी आप सिंपली कॉलेज स्टडी करिए और बाकी हेलो, एक्चुअली देयर वाज अभी ठीक है, मतलब थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आ रहा है मेरी एंड से, मेरे को लग रहा है। सो Yes, sir. yes, आप अगर अपनी तरफ से कोई डाउट पूछते हैं तो थोड़ा मेरे को भी सही होगा, ऐसे मैं कहाँ तक बता सकता हूँ। Yes, sir. So we have one लाइक more question. Like, when do we start for preparing it now? Like, from which year should we start for the preparation? like I have started in my third year summer actually. After third year मैंने एक मतलब क्रैश कोर्स किया था मेडी जी से, तो उसके बाद 2 महीने का क्रैश कोर्स करके मैं बैक टू कॉलेज। और मेरा एक गलती था, मतलब जो आप सब लोग भी करेंगे अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं क्या सोचा कि जल्दी जल्दी कॉलेज से प्लेसमेंट ले लेते हैं और फिर उस प्लेसमेंट से बैठ के फ्री हो जाएंगे और उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है उस, क्योंकि मेरा जल्दी जल्दी प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो प्लेसमेंट जाके बहुत बाद में हुआ, तो मेरे को बहुत बहुत बैठना पड़ता था, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो आपकी प्रिपरेशन को बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो अगर आप रियली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई ऑप्ट के केवल और केवल कोर कंपनियों में बैठिए, जो आपकी एकदम दिसंबर लास्ट मिड में, लास्ट दिसंबर में आती हैं, और किसी कंपनी में मत बैठिए, और अपना प्रिपेयर अच्छे से करिए। तो मैंने तो ऐसे ही किया था। अगर आप लोग और जल्दी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग थर्ड ईयर इज़ गुड टाइम, मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपका मेजर सब्जेक्ट हुआ ही नहीं होता है कोई, तो इसीलिए वो कोई इतना हेल्प नहीं करेगा। फर्स्ट सेकेंड ईयर चिल, बाकी थर्ड ईयर से थोड़ा आपको हेक्टिक होना पड़ेगा, दैट्स इट। Okay, और so, बताइए। so we have one more question with us. Like, what are other career options? लाइक कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट, करियर ऑप्शंस इन मतलब। Like, other than having going to placements or and all. Like, can we have any other career option after doing engineering or not? लाइक देर आर सम, देखो टेक में जाना है तो अदर करियर ऑप्शन एक तो प्लेसमेंट है, उसके बाद मास्टर्स है, एम टेक के लिए यू कैन ऑप्ट
MTech from some prestigious college like IIT or ISC. That is very much good. It will place you, give you so much salary after placement from MTech. और इन यू कैन ऑप्ट फॉर, मतलब उधर भी तुमको अगर प्लेसमेंट अच्छा लेना तो आईटी में ही सॉफ्टवेयर में जाना होगा. मतलब सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर देयर, सो दैट्स व्हाई आई से. और अगर एमबीए की तरफ जाना है तो यस, वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ फ्रॉम आईआईटी आईएम इंदौर, सो यस ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम कॉलेज. सो आफ्टर ही डिडंट टेक एनी प्लेसमेंट्स, और उसके बाद उसने 1 साल प्रिपेयर किया और आईएएम क्लियर करके वो अभी एमबीए आईएएम इंदौर से परस्यू कर रहा है. तो वो है एक ऑप्शन. और कई लोग यूपीएससी का भी सोच लेते हैं, मतलब जोश जोश में, तो वो भी है. बट उसके लिए मतलब थोड़ा सा ध्यान से, बी केयरफुल. Yes, yes, sir. और Thank you, sir. बाकी Yes. ऑप्शंस वो तो आपकी इंडिविजुअल्स चॉइस होती है. वो ऑप्शंस ना, मतलब हर एक पर्सन के लिए हर मैटर करता है, वो आपको देखना होगा. इसीलिए मतलब यही टाइम है, मैं इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि आप पहले अपना सेक्टर डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरफ जाना है. उसके बाद सब चीज़ ईजी हो जाएगा, वरना आप कन्फ्यूज ही रहोगे हमेशा. Yes, तो ये है. yes, sir. और वर्क कल्चर, हाँ, देर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम वर्क कल्चर. सो हाँ, वर्क कल्चर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी. तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ प्लेसमेंट और in a for a company, just search about its work culture from any other platform. तो वर्क कल्चर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर, मतलब अगर आपको सर्वाइव करना है कंपनी में, तो इसीलिए वर्क Yes, sir. कल्चर इज. Thank you, sir, for your valuable time in like clearing our doubts. Thanks a lot. Any other questions? I think like for now, we don't have any other questions. Yes. For now, sir, all our questions and doubts are cleared. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thanks for coming. Thank you. Actually, am I audible? Sahil sir saying that my voice is much bit lower. Yes, sir, you are audible, sir. Yes, sir, yes, Okay. you were audible. वैसे भी अब टाइम खत्म. थैंक यू गाइस, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. एंड थैंक यू सीनियर्स, साहिल सर, थैंक यू. As we all know, that learning is a constant process of discovery, a process without end. So now let's come to our last but not the least guest speaker, Mr. Karthik Saxena, to give us insights about college placements. Good evening, sir. So, Hey, good evening. Can you hear me? Yes, sir, yes, you are audible loud and clear. Okay, great. How's everyone? Are you all like following along what like other seniors have told you so far? yes, Yes, sir. sir. Okay, great. So I'll just start with my introduction. Okay. Hey everyone, my name is Karthik Saxena. I work for Amazon as a software developer, and currently I'm in a team called the Local Shops team. Local Shops is a concept of Amazon that we've introduced in 2020, and currently we're serving over like 1 million sellers for the same. So what Local Shops does is basically जो तुम्हारा like पड़ोस का किराने वाला है, right? He can't sell on Amazon, right? But we want them to sell on Amazon because एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है जो कि कस्टमर के बिल्कुल नेबरहुड में है, and we want all of those sellers to be able to sell on Amazon. So that's what the Local Shops whole thing is, and like I'm a part of that team. और भी बहुत नया नया concept है, नए नए projects आ रहे हैं, so it's very exciting. And yeah, other than that's all from my side. And okay, so moving on, let's just go through the points that I've written down based on the questions that were in chat as well as what I've like जब से मेरे को invite है तब से मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो Yes, एक बार उन points के through जाते हैं and then we'll take the doubts. Okay. So that would be yes, very good. Okay. Yeah, great. So first point is regarding the placement and interview experience. Like I think for me as a मैं अभी इसी साल 2021 में पास आउट हुआ हूँ, एंड मेरा जो प्लेसमेंट था अमेजोन में, इट वाज अ पार्ट ऑफ माय इंटर्नशिप. पहले मेरी 6 मंथ्स की लाइक इंटर्नशिप चली फ्रॉम जनवरी टिल जून, और फिर उसके बाद लाइक आई गॉट कन्वर्टेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय.
राइट। और जो इंटर्नशिप था उसमें उसका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मतलब 3 राउंड हुए थे। फर्स्ट वाज ऑन ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, जिसमें थोड़ी बहुत कोडिंग, थोड़ी डीबगिंग और ये सब हुआ था। फिर एक इंटरव्यू राउंड हुआ जिसमें मेरे से मतलब 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे, और फिर एक सेकंड राउंड हुआ जिसमें कुछ और कोडिंग क्वेश्चन और कुछ बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैं थोड़ा बाद में आता हूँ कि बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं और लाइक व्हाट लाइक अमेज़न एक्सपेक्ट्स, वो हम प्रिपरेशन के टाइम पे आएंगे। नेक्स्ट इज लाइक व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड रिगार्डिंग दिस, लाइक फॉर अ टेक्निकल जॉब, व्हाट आर द बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड। सो आई वुड से फर्स्ट इज लाइक द नॉलेज ऑफ डीएसए, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसके अलावा द नेक्स्ट बिग थिंग दैट यू वांट टू हैव इज like anything that you find cool enough, right? Like anything that you find cool enough to devote your time to, that's your biggest skill. अगर तुमने कॉलेज में कुछ ढूंढा लाइक लेट्स से वेब डेवलपमेंट, और लेट्स से ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, और लेट्स से ऐप बिल्डिंग, कि मुझे मतलब ऐप बनाना सीखना है, या फिर एनीथिंग, anything technical that you can present or make a project on, that's your biggest skill. And anything that you've devoted your time to, that's your biggest skill. So that's important, कि कुछ होना चाहिए वहाँ पे. And next is a little bit basics of like computer fundamentals, जैसे OS, DBMS, networking वगैरह. तो ये सब थोड़े important है. ये इस पे मतलब टेक्निकल जॉब्स में मोस्टली लाइक ओएस के कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं या फिर डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं. अगर आप किसी मतलब बड़ी कंपनी में जाते हो तो उसमें मतलब नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं थोड़े बहुत. बट ये सब जो टॉपिक्स हैं ये मतलब कॉलेज सिलेबस में होते हैं. बट हमने मतलब अगर उसको थोड़ा और परस्यू करना है थोड़ा हायर लेवल पे, तो उसके बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाता है कि ओएस कैसे पढ़ना है, या फिर ओएस में क्या क्या चीज़ें हैं, डीबीएमएस में क्या क्या चीज़ें हैं, नेटवर्क्स एंड ऑल. ओके. Next is the preparation phase. So for the preparation phase, I would say like there are 3 necessary and sufficient prerequisites that should be there. Uh, like a part of the preparation phase is like first is the experience in the forms of internships. जैसे साहिल सर ने भी बोला कि like make sure you do a lot of internships, क्योंकि internships का जो experience है वो काफी count करता है, right? और ये काफी important है when you have like a set of experiences in your like resume. तो वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो काफी दिखता है कि आप कैसे, ठीक है, अपने रेज्यूमे में काम करना आप जानते हो. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए यू कैन आइदर गो फॉर जी सॉक और जी सॉड और GCI, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं. तो वो लाइक हमारे कैंपस में जैसे लाइक लेट्स से दिस अ सीसेक कम्युनिटी, दिस अ ग्लग कम्युनिटी फॉर द सेम. इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिटीज़ हैं. उनको आप ज्वाइन करो, उनसे आप रोबोसॉक वगैरह जैसे है, तो लाइक उनको ज्वाइन करो. यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक, उसमें तुम मतलब काफ़ी कुछ सीख सकते हो कि कैसे मतलब इंटर्नशिप्स कैसे करनी है. देयर इज अ लाइक bunch of seniors, you will find a very great network of seniors in those communities, in every community by the way, कि जिसमें आप पता लगा सकते हो कि अच्छा ठीक है, how to crack an internship. So that's very important. Next, second basic thing is the projects, that if you have any projects or not. So if you have some like good projects, that's very important for you to be able to crack an interview. कि तुम्हारे पास जितनी भी स्किल्स थी, लाइक लेट्स से मुझे ऑगमेंटेड रियलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, बट मेरे पास मतलब मैंने लिखा हुआ है कि अरे मैंने अपने सीवी में लिखा हुआ है मेरे इंटरेस्ट में ऑगमेंटेड रियलिटी है, बट मेरा उस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस कि मैंने 4 साल में फिर क्या किया इंटरेस्ट को लेके. मैंने हाँ मतलब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे VR वीडियोस फिर ऑगमेंटेड रियलिटी वीडियोस देखे, बट मैंने करा क्या उस स्किल को लेके, राइट? तो वो अगर स्किल डेवलप करनी है तो यू हैव टू मेक सम प्रोग्रेस ऑन द सेम. नेक्स्ट इज ओके, in experiences हो गए like internships, projects हो गए, and then next is the skills like anything, and like I like said before, anything that you can devote your time to like a few months or a few years in college, that's your biggest skill. So वो होना चाहिए कुछ ना कुछ, वो preparation के phase में आता है. Next is okay, preparation में like I said before कि interviews में हम लोग क्या क्या पूछते हैं, फिर behavioral interviews क्या होते हैं, coding interviews क्या होता है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बताऊंगा. तो जस्ट अ सेकेंड. कूल. तो जैसे जब से मैंने अमेजोन ज्वाइन किया, अमेजोन ज्वाइन करने के लाइक अराउंड 3 मंथ्स बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अमेजोन के इंटरव्यूज ले सकता हूँ. तो स्पेसिफिक टू अमेजोन है ये, मतलब जो मैं बताने वाला हूँ, बट लाइक इट कैन बी जनरलाइज टू एवरी कंपनी, एवरी टेक कंपनी. स्पेसिफिक टू अमेजोन हमें हर एक इंटरव्यूअर को एक कॉम्पिटेंसी मिलती है कि मतलब तुम्हें इस एक कैंडिडेट को इस चीज पे जज करना है, एंड बेस्ड ऑन योर जजमेंट they'll बी लाइक सेलेक्टेड और नॉट लाइक फॉर दैट कॉम्पिटेंसी. वो कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होती हैं? कॉम्पिटेंसीज कैन बी कोडिंग, कॉम्पिटेंसीज कैन बी नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स,
एल्गोरिदम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मैनी मोर। तो ये सब चीज़ें हमें ये सब कोडिंग वाले जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो हैं। तो हम लोग क्या पूछते हैं, जैसे मैं एज एन इंटरव्यूअर जब आता हूँ किसी के सामने, तो आई जनरली आस्क अ फ्यू कोडिंग क्वेश्चंस कि मैं मतलब उनसे पूछूंगा कि अच्छा ठीक है, मतलब लाइक व्हाट ऑल यू हैव डन, लाइक लेट्स टेस्ट योर नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और मे बी कोई एक वी डोंट आस्क मेनी पजल टाइप क्वेश्चंस, बट अगर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर मुझे जज करना है तो लाइक आई प्रॉब्ली आस्क देम टू सॉल्व not a differentiation integration type question, but something sort of a puzzle in terms of coding is only. So वो चीज like I would ask them to solve, and that will be like a judgment on their problem solving skills. So that's important. And जो behavioral questions होते हैं, फिर जो behavioral चीजें हैं, जो behavioral rounds होते हैं, that's basically on उसमें Amazon के there's this very cool concept called the leadership principles. Amazon पूरा पूरा उन leadership principles के around ही work करता है, like every promotion, every selection, rejection, every project, every customer input, every feedback that they've like the customers that we get from the customers, or the like reactions to those feedbacks are judged based on those leadership principles. तो जो वो leadership principles हैं वो कुछ कुछ मतलब बहुत basic general guidelines लगते हैं, but Amazon में काफी ज्यादा अच्छे से apply होता है. So one of those leadership principles is learn and be curious. So if I have to judge someone on the learn and be curious part, so I would just ask them if any in the past if they have any experience जहाँ पे मतलब उनको कि वो कहीं पे जाके फंस गए, and they have to figure out a way, or they do not know what to do now and then have to figure out the next steps to solving something, or solving any problem or any project or something like that. So that's the competency that I can judge them on, and जिसके हिसाब से वो मुझे inputs देंगे और मैं उसके हिसाब से data points calculate करूंगा. Okay, that's the preparation phase. Next is the job experience. कि मैंने like क्या क्या experience किया so far in Amazon. पहली बात तो क्योंकि मतलब I've been in Amazon for over a year now, and मोस्टली मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया है, तो मुझे पता है कि मेरा ऑफिस कहाँ पे है, बट अगर मुझे ऑफिस में ले जाओ तो मैं खो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑफिस कभी देखा नहीं अंदर से. तो सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि मतलब हाँ, एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसको मतलब मैं कम्युनिकेट करता हूँ, जैसे जैसे अर्थ टू एलियन टाइप, कि अच्छा ठीक है, एक विंडो खुल के आती है, उसमें कुछ चेहरे दिखते हैं, मुझे मुझे उनसे बात करनी होती है, मुझे कुछ काम देते हैं, मैं उनका काम करता हूँ. तो अभी तक वही चला है. बट आई फील कि अमेजोन जब मैं ज्वाइन करने वाला था उससे जस्ट पहले आई वाज रीडिंग अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस, द वर्क कल्चर, वर्किंग आवर्स और पर्क्स एंड बेनिफिट्स वगैरह. तो आई वुड से कि मतलब बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस थे, बहुत सारी वेबसाइट्स जैसे ग्लास डोर है, ब्लाइंड वगैरह है, उस पर काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस थे. सो व्हाट व्हाई आई फिगर्ड इट आउट कि मतलब व्हाई इज इट अ मिक्स्ड ओपिनियन, मतलब मुझे बाद में आके पता चला जब मैंने अमेजोन ज्वाइन किया. इट वाज बेसिकली ड्यू टू कि it depends from team to team. Amazon doesn't have a very standard guideline of like working hours or work culture and all. It depends from every team and how the team functions. हर टीम को मतलब एक बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीडम मिलता है कि एक स्टार्टअप की तरह वो काम कर सकता है, एंड एक बहुत मतलब स्टार्टअप टाइप कल्चर आपको मतलब देखने को मिलेगा हर टीम में विद इन Amazon. तो एक बहुत जनरल गाइडलाइंस ऊपर ऊपर होती हैं, बट लाइक एवरी टीम कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन, कि कब काम करना है, कब नहीं करना, कब मीटिंग्स करनी है, कब छुट्टी लेनी है. तो ये सब चीज़ें हैं. पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी होते हैं, मतलब ठीक ठाक होता है. और इसके अलावा लेट्स से जॉब एक्सपीरियंस में सो फार द ओके, एक मैं वो करना चाहूँगा यहाँ पे, क्लियर करना चाहूँगा एक डाउट कि लेट्स से तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो on your DSA and algorithms and your developing your skills for the interviews, क्या वो चीज़ें आगे काम आती है. तो वो चीज़ उसमें मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि लेट्स से तुम जब 12th में थे, तुम जब IIT की तैयारी कर रहे थे, लेट्स से तुमने बहुत कुछ पढ़ा था उस टाइम पे, राइट? तुमने थर्मोडायनामिक्स से लेके और फिर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके और पता नहीं क्या क्या पढ़ा था उस टाइम पे. तो वो चीज़ें जो थी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट, जैसे अगर तुम्हें लगता है कि वो कॉलेज में आके अप्लाई हो रही हैं, कुछ ब्रांचेस में हाँ अप्लाई होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, सब चीज़ें नहीं, बट छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई होती हैं वो कॉलेज में आके, वैसा ही है. मतलब ये पूरा जो 12th टू कॉलेज वाला जो फेज है, इट्स द सेम कि तुम जब कॉलेज से कंपनी में जाते हो. कॉलेज में तुम्हें मतलब जैसे जो तुम प्रेपरेटरी फेज है तुम्हारा, जैसे तुम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू विल बी एक्चुअली डूइंग. मतलब तुम्हें हो सकता है तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने को मिले या फिर पढ़ना पड़े फॉर एन इंटरव्यू, बट व्हेन यू गो टू द कंपनी एंड यू स्टार्ट वर्किंग, वो सारी चीजें हो सकता है अप्लाई ना हो.
तो वैसा 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 एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब हाँ, बट आई वुडेंट से कि जो मैंने कॉलेज में पढ़ा वो बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, ऐसा नहीं है. आई वुड से 60% ऑफ व्हाट आई स्टडीड इन माय कॉलेज लाइफ हैज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट आई वर्क इन Amazon एज. बट जो 40% चीज़ें थी जो मैंने कॉलेज में पढ़ी और मतलब उस पर काम किया जो भी, वो सब चीज़ें काम नहीं आती. तो ये चीज़ मतलब ये चीज़ भी टीम टू टीम भी डिपेंड करती है. बट ये चीज़ ऐसा ही है जैसे 12th, जैसे कोई भी ट्रांजिशन फेज में आना चाहिए. और लास्टली कुछ टिप्स मुझे बोला गया था कि देनी है जूनियर्स को. तो मतलब अभी तक कुछ टिप्स, बहुत कूल कूल टिप्स मिली है, साहिल सर ने दी, अंकुश सर ने दी, तो और ऋतिक ने दी. तो मतलब मैं भी कुछ ऐड ऑन करूंगा उसी उन्हीं टिप्स में कि फोकस ऑन समथिंग. जैसे चलो ठीक है, ये तो वो टैग लाइन ही बन गई है. फोकस ऑन समथिंग दैट यू फाइंड कूल इनफ टू डिवोट योर टाइम टू. राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉलेज. लाइक if you find anything cool enough, you should focus and like devote your time to the same. Next thing is your resume and replies decide the flow of your interview. कि तुम्हारे रेज्यूमे में क्या लिखा है और तुम क्या रिप्लाई कर रहे हो उस इंटरव्यूअर को, दैट डिसाइड्स कि तुम्हारा इंटरव्यू किस तरफ फ्लो करेगा. जैसे अगर मेरे रेज्यूमे में इस समय सिर्फ 2 इंटर्नशिप्स हैं, बट लाइक इफ वन ऑफ दोज इंटर्नशिप्स इज वेरी कूल, तो मतलब वो इंटरव्यूअर उसी चीज को लेके फोकस करेगा, उसी चीज को लेके बात करेगा और उसी स्किल्स को लेके क्वेश्चंस पूछेगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू राइट ऑन योर रेज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हाउ योर इंटरव्यू विल गो. अगर तुमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट डाला हुआ है रेज्यूमे में जो तुमने कभी किया ही नहीं, या एक टीम प्रोजेक्ट था उसका तुमने सिर्फ लॉगिन पेज बनाया था, तो मतलब उस पर फिर कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो फिर तुम आंसर नहीं कर पाओगे, या फिर तुम मतलब पढ़ के आओ उस प्रोजेक्ट के बारे में. तो दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टिप वुड बी ऑलवेज ऑलवेज हैव अ प्लान बी. मतलब डोंट जस्ट गो फॉर कि मुझे एक ऑफर मिल गया एंड दैट्स द एंड. कभी भी ऐसा मत करो. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव लाइक एटलीस्ट मोर देन वन ऑफर, क्योंकि नहीं पता इस समय जैसे कोविड का सिचुएशन है, इस समय मतलब बहुत लोगों के जॉब्स मतलब उन्होंने डेफर कर दिया या फिर मतलब कैंसिल कर दिया ऑफर्स. तो वो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. इट इज़ वेरी ट्रू फॉर एनी कंपनी, और जैसे नॉट जस्ट फॉर स्मॉल स्टार्टअप्स, इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर वेरी बिग कंपनीज एंड लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज. तो दैट हैपन्स. ऑलवेज हैव अ प्लान बी कि तुम्हें क्या करना है. तो मैंने भी गेट दिया था. तो चलो नेक्स्ट, लास्ट स्टेप वुड बी नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि मतलब हाँ, मतलब ये बात अभी तो हो चुकी है थोड़ी बात पहले, कि क्लब्स कौन से ज्वाइन करने चाहिए, किस क्लब से क्या फर्क पड़ता है प्लेसमेंट में. कोई क्लब से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेसमेंट में. मतलब इट्स जस्ट कि तुम्हें अपनी स्किल्स डेवलप करनी है उस क्लब में जाके, और तुम्हें कुछ लोगों से मिलना है, कुछ लोगों से नेटवर्क करना है. दैट्स द होल थिंग. मेरे लिए क्लब्स, मैंने बहुत क्लब्स ज्वाइन किए थे, और मतलब काफ़ी सारे क्लब्स ज्वाइन किए थे, only because I felt कि the people in those clubs were very cool. So I found them cool to be able to spend time with them and learn how they are so cool. तो मुझे वो बहुत cool लगता था, इसलिए मैंने उनके साथ वो क्लब ज्वाइन करे. और जैसे साहिल सर वगैरह हैं, तो इनसे मैं like all through like the whole communication between me and Sahil sir happened through a club. तो और अब हम लोग मतलब इतने अच्छे दोस्त हैं, हम लोग बात करते हैं, वो मुझे मेंटर करते हैं. तो ये सब चीज़ें. तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग कैन हैपन ओनली थ्रू कॉलेज लाइफ में, या तो क्लब ज्वाइन करो या फिर सोसाइटीज ज्वाइन करो, एनीथिंग, और लिंक्डइन में भी, बट आई एम नॉट श्योर. बट ओके, क्लब्स और सोसाइटीज का मेन रोल मेरी लाइफ में बस ये था कि मैंने उसकी वजह से नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो गई मेरी. दैट्स ऑल. ओके, अब फॉर क्वेश्चंस. Okay, sir. So first we have question from the CSC people. Like, should we go for big corporates or join startups? बिग कॉर्पोरेट्स और अच्छा ओके, और जॉइन स्टार्टअप्स. Startups, yes, sir. मेरे सीनियर्स एक कहा करते थे, एंड आई थिंक इट्स स्टिल ट्रू, क्योंकि मैं इस साल ही प्लेस हुआ हूँ. तो इट्स द सेम. मतलब इंटर्नशिप्स करो स्टार्टअप्स में, और जॉब लो अच्छी बड़ी कंपनी में. दैट वाज द टोटका जो चलता था मेरे टाइम पे, कि इंटर्नशिप्स करोगे स्टार्टअप में तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हारा ग्रोथ का बहुत बड़ा होगा. और मैंने भी एक इंटर्नशिप एक स्टार्टअप में करी थी, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं अगर चाहो. और जॉब लो तो मतलब बड़ी अच्छी कंपनी में ले सकते हो, अनलेस यू आर इन लव विद दैट स्टार्टअप. क्योंकि स्टार्टअप में जितना सीखने को मिलेगा, इट्स वे बियॉन्ड जो तुम्हें एक बड़ी कंपनी में देखने लाइक सीखने को मिलेगा. बट Yes. इफ यू थिंक लाइक कि जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस और मतलब वर्किंग आवर्स ये सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो बड़ी कंपनी पे जाओ. अगर तुम्हें लगता है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर कि तुम्हें बस सीखना है और तुम्हें मतलब ग्रोथ कर्व लेना है अच्छा खासा, तो
आराम से मतलब स्टार्टअप को ज्वाइन करो और उसमें सीख सकते हो। Okay, so next up we have that our two projects are enough for taking placement in product-based companies. वो डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। अगर बहुत ही मतलब ऐसे कैसे धांसू से प्रोजेक्ट बना दिया तो हाँ, बट प्रोजेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट सेकंड है, फर्स्ट इज इंटर्नशिप्स और एक्सपीरियंस, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, देन इज प्रोजेक्ट्स, देन इज स्किल्स। तो हाँ, टू प्रोजेक्ट्स मे बी इनफ। मेरे रेज्यूमे में इस समय शायद एक ही प्रोजेक्ट है, मेरा मेजर प्रोजेक्ट। उसके अलावा जो मतलब पुराने प्रोजेक्ट्स थे मैंने हटा दिया, आते नहीं मेरे को, अब समझ नहीं आता। चलो नेक्स्ट। एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, sir. We have like sir, we have one question in the previous one like that. DSA with the DSA and the web development, CSC other objects like DBMS, OS, like it's important to study for IT company. मैंने ये शायद पॉइंट ऑलरेडी ऐड कर दिया था कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है जैसे ओएस डीबीएमएस नेटवर्किंग वो इम्पोर्टेंट है। मैंने जितने भी आईटी कंपनियों के लाइक इंटरव्यूज दिए हैं सब में कुछ ना कहीं किसी लेवल पे पूछा जाता है, लाइक नॉट जस्ट फॉर सीएससी बेस, इवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस जैसे क्वालकॉम वगैरह, दे आस्क यू वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस ऑन ओएस डीबीएमएस एंड ऑल, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। Sir, can you share your internship experience to like students? amazon वाली या पिछली वाली? दोनों ही कर दो जो अच्छी लगे आपको। ओके, जिसमें ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब अच्छा डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, बट ओके। आप अगर दोनों ग्रोथ के का, points बता सकते हो, हाँ। ठीक है चलो। हाँ जी। मैं पहले amazon वाली करता हूँ क्योंकि दूसरी वाली मेरे ख्याल से ज़्यादा कूल है, तो उसमें से बाद में आता है। amazon वाली जो इंटर्नशिप थी उसमें मुझे मतलब द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइक इंटर्निंग विद amazon इज कि वो तुम्हें इंटर्न नहीं समझते, वो तुम्हें लाइक फुल टाइम एसडी रोल वाला ही समझते हैं। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू गेट, द इम्पैक्ट दैट योर कोड जनरेट्स, द बग्स दैट यू कैन इंट्रोड्यूस इन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से कोड फट सकता है प्रोडक्शन में, वो सब होता है। मतलब मैंने भी अपने इंटर्नशिप के टाइम पे बग्स बहुत सारे डाल दिए थे प्रोडक्शन में, और फिर उसकी वजह से मतलब कोड फटा था अमेजोन का, बट ठीक है मैंने हैंडल कर लिया लास्ट में। बट दैट्स इम्पोर्टेंट, मतलब द ट्रस्ट दैट दीज गाइज हैव ऑन यू इज वेरी लाइक इट्स फिनोमिनल। बहुत सारी कंपनियों में जो इंटर्न कुछ कोड कर रहा है उसको लाइक कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं देंगे, या फिर मतलब काम भी देंगे तो उसका जो कोड है वो प्रोडक्शन में कभी पहुंचेगा नहीं, ये ऐसा हो चुका है। तो best part about the internship of Amazon is the like impact that I generated was pretty huge। मतलब वो देखने को मिलता है जब आपके मतलब कुछ like 1 लाख या फिर 2 लाख sellers आपका कोड यूज करते हैं रोज, and then they are happy with your code। तो वो अच्छा लगता है सुनने में कि अरे like पहली बार किस कोई तो मेरा कोड यूज कर रहा है, वो चीज। तो दैट्स इम्पोर्टेंट। सो वो सबसे बेस्ट पार्ट था अमेजोन के इंटर्नशिप का। दूसरा, काम अच्छा खासा था, ग्रोथ कर्व भी अच्छा खासा था, बट इंटर्नशिप्स के टाइम पे थोड़ा बहुत मतलब जो वर्किंग आवर्स हैं वो एक्सटेंड होते हैं बियॉन्ड नॉर्मल, क्योंकि इंटर्नशिप में इफ यू डोंट हैव अ फुल टाइम ऑफर, अभी Amazon इज ऑफरिंग इंटर्नशिप्स इन टू वेज, आइदर विद अ फुल टाइम ऑफर और विदाउट अ फुल टाइम ऑफर। मेरे पास उस समय फुल टाइम ऑफर नहीं था ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, दैट्स व्हाई आई हैड टू प्रूव कि अच्छा ठीक है मुझे काम करना आता है विद इन 6 मंथ्स। तो मुझे एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़े टू बी एबल टू गेट दोज डेटा पॉइंट्स, राइट डेटा पॉइंट्स अंडर द राइट लीडरशिप प्रिंसिपल्स, टू बी एबल टू गेट अ कन्वर्जन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अच्छा, दूसरी इंटर्नशिप पे आते हैं। अमेजोन की इंटर्नशिप वाज ओवरऑल वेरी फन, बट उस टाइम पे उस टाइम पे मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था कॉलेज का। So I also had my thesis, I also had my exams, I also had my research paper। तो काफ़ी कुछ वो हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ गया था, बट ठीक है, इट वाज ओवरऑल इट वाज वेरी फन। द इंटर्नशिप पार्ट वाज वेरी फन, बाकी सब मैनेज करना पड़ा तो वो हो गया मैनेज। उसके अलावा चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। दूसरी इंटर्नशिप मैंने करी थी, देयर इज दिस वेरी कूल स्टार्टअप इन बैंगलोर कॉल्ड मैकेनिकल शेफ। मैकेनिकल शेफ में आई गॉट एन इंटर्न। मैकेनिकल शेफ वाले जो लोग हैं वो एक बड़ी कूल चीज कर रहे हैं। व्हाट दे डिड वाज दे हैव मेड अ रोबोट दैट कैन कुक इंडियन फूड, लाइक इट्स अ प्रॉपर जैसे डिब्बा टाइप रोबोट है,
दैट कैन एक्चुअली कुक इंडियन फूड। मतलब उसमें बर्नर्स लगे हुए हैं, उसमें पैन होता है, उसमें स्टरिंग वगैरह होती है, उसमें वेजिटेबल्स ड्रॉप होती है, मसाले वगैरह। तो इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ थिंग जो देखने को मिलती है। So I worked on that. Like I worked on it was an interdisciplinary internship जिसमें मुझे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक समझना था, जो रोबोट कैसे काम करता है, एंड हैड टू बिल्ड एन इंटरफेस विद द रोबोट, कि मतलब एक वेबसाइट प्लस एन ऐप टू बी एबल टू इंटरेक्ट विद दैट रोबोट। तो वो एक मतलब काफ़ी कूल इंटर्नशिप थी। और उसमें द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इंटर्नशिप वाज कि हमें रोज़ नया खाने को मिलता था जो कि रोबोट कुक करता था। और हमारा लंच जो पूरा था वो हमारा रोबोट बनाता था, कि ठीक है चलो आज गोभी, आज आलू, आज ये सब ऐसे। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय इंटर्नशिप। आई गेन्ड अ Yes. लॉट ऑफ वेट, बट क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था इसलिए। इस समय वो शायद मार्केट में है, अभी वो प्रोटोटाइप लॉन्च करने वाले थे कुछ, लाइक लास्ट आई चेक्ड। So mechanical, you can check out Mechanical Chef. It's a very cool startup. That's all. Yes. So next up we have like machine learning, web development, and DSA. He is asking about the combination of two. What would be the better combination of the two among three? Like DSA, web development, and machine learning. Okay. Um, किस जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, लाइक they can decide कि उसमें से ज्यादा कूल क्या लग रहा है सुनने में. If ML sounds cool to you, go for ML. If like web development sounds cool to you, go for web development. But हाँ, DSA में कहूँगा एक छोटा सा prerequisite है कि DSA में मतलब you need some like experience in DSA to be able to crack some interviews or crack the coding round of the interview especially. Not necessarily your projects and all. Projects तुम्हारे ML में हो सकते हैं या web development में हो सकता है, but you still need DSA. तो DSA एक prerequisite मान लो. बट हाँ, अगर वेब डेवलपमेंट या एमएल में जाओगे तो वट एवर यू फाइंड कूल इनफ, आई फाइंड वेब डेवलपमेंट टू बी कूल इनफ। तो मैं पूरे जितने मेरे प्रोजेक्ट्स थे, मेरे मेजर प्रोजेक्ट से लेके और मेरे मतलब इंटर्नशिप प्रोजेक्ट तक लेके सब कुछ, जितना ही मैंने काम किया वो सब वेब डेवलपमेंट पे था। यस सर। लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे, किस टाइप से उनका रोड मैप होना चाहिए अभी एट प्रेजेंट? प्रॉपर मतलब जो टेक्निकल जॉब्स के लिए ही जाना चाहते हैं। यस सर, जो ओके, टेक्निकल जॉब्स में जाना चाहते हैं। ओके। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो फर्स्ट लेट्स फाइंड समथिंग दैट यू फाइंड, लाइक इफ यू फाइंड समथिंग कूल, और मे बी इन फर्स्ट ईयर जो करना है करो, मतलब जो अच्छा लग रहा है वो उठाओ, सीखो, ट्राई करो। नहीं अच्छा लग रहा छोड़ो, आगे बढ़ो, कुछ और उठाओ, सीखो, ट्राई करो, आगे बढ़ो। तो ये चीज मतलब फर्स्ट ईयर में एज मच एक्सप्लोरेशन दैट यू कैन डू दैट। इफ यू फाइंड कि ठीक है, अरे ऑगमेंटेड रियलिटी बहुत कूल है, और ऑगमेंटेड रियलिटी मुझे कुछ बनाना है ब्लेंडर वगैरह कुछ यूज करके, तो यू कैन डू इट। लाइक मैंने भी वो सब किया है, बट मैंने बहुत लेट किया, बट तो ये अगर तुम्हें वो बहुत कूल लग रहा है वो चीज़ करो। और उसके अलावा मेक श्योर थोड़ा बहुत, अगर मैं मतलब सीएसई पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मेक श्योर यू लाइक यूज लिनक्स। लिनक्स इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लिनक्स मतलब अगर कहते हैं कि ठीक है अरे विंडोज पे भी तो सेम काम हो रहा है, but ऐसा नहीं है। लिनक्स में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लिनक्स the operating system teaches you a lot about like how to deal with stuff, like जब तुम्हारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है, so that you don't need to call कि हमारे कंप्यूटर वाले भैया कंप्यूटर खराब हो गया, वो नहीं करना होता। लिनक्स में तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो क्योंकि तुम बहुत कुछ खुद सॉल्व कर सकते हो। लिनक्स के काफी सारे बेनिफिट्स है, वो सब मतलब ग्लग हैंडल करता है, आई वोंट गो इनटू दैट। यूज लिनक्स फर्स्ट, नेक्स्ट मेक अ गिटहब अकाउंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब जो भी तुम कोड लिख रहे हो, जो भी तुम कोड कर रहे हो, वो तुम्हारा गिटहब पे मतलब पुश होना चाहिए। गिट सीख लो, गिट इज वेरी इंपॉर्टेंट in any case. Third would be start working on your DSA. थोड़ा बहुत लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ वगैरह। नॉट ऐसा मत करो कि लाइक यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर रैंक एंड ऑल, क्योंकि अभी तक भी मैं कोड शेफ पे 2 स्टार ही है। तो मतलब मैं कभी फोकस नहीं किया रैंक पे, बट ठीक है मतलब कर सकते हो अगर पैशन है तो। बट ठीक है मतलब अगर लगता है कि अच्छा ठीक कोडिंग आनी चाहिए, बट मतलब वो उसमें मत फंसो कि अरे उसने तो बहुत अच्छा कर लिया, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। इफ यू थिंक कि ठीक है तुम्हें कोड करना आता है, तुम्हें कोड सीखना है, तो यू कैन एनीवे लाइक मेक एन अकाउंट और लीड कोड और कोड शेफ, और उस पर स्टार्ट कर सकते हो कोड करना। इसके अलावा 3 पॉइंट्स ये, नेक्स्ट मेक प्रोजेक्ट्स, लर्न न्यू स्किल्स। अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगा है सो फार इन योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जाके उसमें प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दो, एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर रेज्यूमे स्टार्टिंग से ही। मतलब सेकंड ईयर तक अगर तुम्हारे रेज्यूमे में एक प्रोजेक्ट है तो दैट्स अ गुड इनफ स्टार्ट, so that you can start applying for internships like in the starting of second year only.
अगर तुम्हारा उससे पहले ही मतलब फर्स्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट बन गया, दैट्स गुड इनफ। मतलब फर्स्ट ईयर के समर वेकेशन को यूज करो, इंटर्न कर लो उसमें। एक इंटर्नशिप्स ढूंढने भी बड़े आसान होते हैं। देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू आउट देयर, एंड यू कैन गो फॉर एंड ग्रैब एनीथिंग, लाइक फॉर एनी इन एनी केस। मतलब वेब डेवलपमेंट में भी, एमएल में भी, ऑगमेंटेड Hmm. रियलिटी में भी, डिजाइन में भी, यूएक्स यूआई, सब चीजों में Yes, बहुत yes. अपॉर्चुनिटी है। तो ये रोड मैप हो गया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, कि बाय So सेकंड like, ईयर मेक श्योर यू hmm. अचीव योर, लाइक रेज्यूमे बना लो, कुछ स्किल्स डाल दो, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, और मतलब फाइंड समथिंग दैट यू लाइक बेसिकली। Yes, sir. Thank you. सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर लाइक ज़रूरी है like, इस प्रोसेस में टेक्निकल जॉब्स के लिए? इफ यू आर अप्लाइंग, इफ अगर तुम्हें कॉलेज से निकलते ही मतलब SD2 बनना है किसी कंपनी में, तो हाँ। अगर बट SD2 नहीं बनते कोई, तो SD2 हम्म, के लिए फोकस मत करो। SD2 के लिए मतलब जो प्री रिक्विजिट होता है उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इफ यू आर गोइंग फॉर सम रिसर्च पर्पस, रिसर्च वाले जो जॉब्स होते हैं उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूछते हैं। बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ बेसिक टेक्निकल जॉब लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मे बी ML साइंटिस्ट ऑल्सो, बट उसमें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की इतनी जरूरत नहीं है सो फार। अगर तुम्हें OS की नॉलेज है, दैट्स फाइन। और सर लाइक CGPA मैटर कितना करता है अगर करता है तो लाइक इसमें? सिर्फ प्लेसमेंट में बैठने के लिए। ठीक मतलब है, मैं ठीक ये है। नहीं कहूंगा कि हम्म, CGPA में फोकस मत करो, फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना अच्छा CGPA बना लो कि वो आगे जाके वो हिले ना। मतलब compensate इवन हाँ इफ जी, यू, हाँ जी। हाँ मतलब इवन इफ यू लाइक थर्ड ईयर में, क्योंकि यू हैव टू फोकस ऑन इंटर्नशिप्स, थर्ड ईयर में कंपलसरी होती है इंटर्नशिप्स। हम्म, तो अगर उस टाइम पे जाके तुम्हें बहुत सारी चीजों में और फोकस करने करने का टाइम चाहिए, तो तुम मेक श्योर कि लाइक तुम सेकेंड ईयर तक एक बहुत अच्छी CGPA बना के रखो। हम्म। एनी अदर क्वेश्चंस? Do HFT companies allow EE branch like? ऑन कैंपस तो शायद नहीं, बट ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस में कुछ कंपनीज होंगी जो अलाउ करेंगी। आई थिंक Amazon डज अलाउ, बट हम्म, ऑफ कैंपस भी तुम अप्लाई कर सकते हो। लाइक इट्स नॉट। और एक चीज सोचो, मतलब if you're in this engineering college, don't you know sideline yourself कि अच्छा ठीक है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करी है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। नहीं, मैं हम्म, इलेक्ट्रिकल चूज किया तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं। यू आर अ पार्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तुम जब इस इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलोगे, यू आर एन इंजीनियर, यू नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और अ कंप्यूटर इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट। यू आर एन इंजीनियर। तो डोंट let go of any opportunity because of your branch. If you're interested in something, go for it. मैं ऐसे ऐसे सीनियर्स हुए हमारे कॉलेज में जो सिविल में भी थे, एंड देन दे क्रैक GSOC। जैसे आई थिंक हम्म, यू गाइस माइट नॉट नो देम, बट ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि मतलब बहुत कोर ब्रांचेस में भी थे, एंड देन दे क्रैक GSOC, एंड फिर मतलब GSOC में उनको, GSOC के थ्रू जो कंपनी जिसमें वो लाइक वो कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उसके साथ उन्होंने लाइक दे कैरिड फॉरवर्ड विद देयर जॉब एंड ऑल। तो ऐसे लोग भी हुए हैं हमारे कॉलेज में। इट्स नॉट दैट हम्म, कि so like, प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो गाइडलाइंस है, बट ऑफ कैंपस यू कैन सिट फॉर एनीथिंग। ये सर लाइक और रेज्यूमे टिप्स आप कुछ देना चाहेंगे लाइक आपकी साइड से? सिंपल रखो रेज्यूमे मतलब उसमें मतलब बहुत ज्यादा कलरफुल सा और वो सब मत करो। वो तो चलो ठीक है, UI पे फोकस मत करो, ये रेज्यूमे, हाँ इंटरफेस पे फोकस मत करो। फोकस ऑन द कंटेंट फर्स्ट, एंड लाइक जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने बताई उसके हिसाब से डालो रेज्यूमे में। लाइक इफ यू हैव आफ्टर योर इंट्रोडक्शन और योर मार्क्स, अगर तुम्हें डालने हैं तो मेक श्योर यू लाइक प्लेस योर इंटर्नशिप्स फर्स्ट, देन यू प्लेस योर प्रोजेक्ट्स, देन यू प्लेस योर स्किल्स। तो वो इंपॉर्टेंट है उस लेवल पे। और रेज्यूमे, जैसे हम लोग जब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, हमारे पास आता है अमेजोन में, व्हाट आर जनरल ट्रेंड दैट वी सी इन रेज्यूमेज इज कि वो एक तो दे आर वेरी प्रिसाइज। मतलब रेज्यूमे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे पूरी कहानी लिख रहे हो, डोंट डू दैट। वेरी प्रिसाइज, वन लाइन में कि एक्सप्लेन कर दो कि अच्छा ठीक है, मैंने ये किया, मैंने ये इंटर्नशिप करी, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, एंड व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट। सिंपल, कीप इट सिंपल, डोंट लाइक ओवर कॉम्प्लिकेट दिस एट ऑल। और रेज्यूमे टिप्स, स्टार्ट बहुत जल्दी बनाना शुरू कर दो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। शायद फर्स्ट ईयर में ही कोई क्लास होती है मैनेजमेंट की, उसमें सिखाते हैं कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। यस सर, तो यस सर। रेज्यूमे बना के और फिर उसको मतलब every month, I would say after first year, every month make sure you add something to your resume, कि तुम्हें थोड़ा बहुत अपडेट करना है उस रेज्यूमे को। डोंट बी लाइक कि अरे
अरे मैंने 1 साल पहले अपना रिज्यूमे खोला था, तब से एडिट नहीं किया। क्योंकि तब जब अपॉर्च्युनिटी आएगी तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा रिज्यूमे एडिट करने बैठने का। एवरी मंथ यू बी मेक श्योर कि तुम रिज्यूमे में कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हो। दैट्स ऑल। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah, I think Sahil Hmm. sir was asking ki he would like Hmm. to Yes, add sir. some I points. said yes. So I won't take any more time. I can Sahil sir can take over. Okay, sir. Thanks a Thank lot for you. joining us Okay, so today. thank you so for your experience. बहुत like काफी insights दिया आपने. Thanks a lot for that. Oh, he was wonderful. He gave very, Yes, it accurate was very. insights. Yes, Hmm. sir. Because Yes. probably is recently passed out. He's Yes, having sir. recent experience. By the way, I'm not his mentor, right? Okay, he's just joking. Anyhow, one thing that I just got from the top of my head was like the recruiters are looking for spikes in your CVs, right? So a spike would be something like, for example, if you have you play football. So have you played football till the district level or not, or till the national level or not? So this is a spike in a CV. If you play football for a college team, that is not a spike in a CV. So uh, the recruiters are looking for a spike. Like when you go for companies right after college, that spike might be very small, but when you go for bigger companies, that spike would be like मतलब उतना ही अच्छा spike चाहिए, है ना? So the better the job you are applying for, the better the spike you need. So for a first year or a second year student, what you can do is you can plan it in a way कि भाई over the period of next 2 3 years, what are the spikes that I can create in my CV or create in my profile. So and plan your activities and your time towards devote your time towards different things according to that. And one other thing, I think people are talking about startups. So a general consensus is that whatever you learn in a big MNC in 1 year, in 7 years, is what is you will learn that in 1 year in a startup. Because what happens is the bigger the company is, the smaller your job would be, because there are a lot of dependables and there is a lot of rigidity. Amazon, he rightly said that there are different teams and they operate like a startup. The reason for that is because when you give autonomy to a particular team, the growth is much faster. And basically the thing is, the bigger the company, the more stiff it would be, and it is more difficult to change a lot of things in that company. But when you work in a startup, what happens is, number one, every employee in a startup does everything. It's not like if you're doing a website design for them, or you're handling sales and marketing. It's not like that. Whenever somebody joins a startup, he or she is doing everything that is there, and every profile is theirs only, because you're basically building a business. So startups are like that. You get acquainted to a lot of different things when you're not just a normal employee who is just working over there. So at this stage, probably at the stage of internships, you might not feel that, but once you join a startup and you start doing a job in it, then probably you will realize this. If you're looking to grow and develop your skills, and skills in various departments, like personal skills and technical skills and all of that, uh, then startups are a very very good option for that. And I've seen a lot of people, even after doing MBA from IIM Ahmedabad or London Business School and everything, they join startups because uh, what in the industry it is thought of as a prize collection in a CV. Because if you worked in a startup and helped it grow to a certain level, and then you move on to something else, then it is a very important thing in a CV. So generally, what people think is the bigger the company, the better it is, but it's not the case. Every company, uh, in fact, startups have more growth opportunities for you, and way more learning opportunities for you than bigger companies. So that is something that I wanted to add, because that is a general misconception among students. And about first year students, I think Karthik gave a perfectly good outline for how to go about it, because you're pretty much confused about, even after listening to a few speakers, you are pretty much confused कि भाई करना क्या है. मतलब सुन तो लिया हमने, बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है. करना यही है कि यू फाइंड समथिंग दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, you find cool, as Karthik said,
and then you try to build a general, know-how about it, and probably do a project and find an internship ढूंढना बहुत आसान होता है. ठीक है, आज की डेट में अगर आपको कोई टेक की फील्ड में अगर कोई भी इंटर्नशिप ढूंढनी है, इट इज़ वेरी इजी. जस्ट गो फॉर कोल्ड ईमेलिंग. ठीक है, कुछ नहीं, एक यू प्रिपेयर अ रिज्यूमे एंड यू सेंड इट आउट टू 100 डिफरेंट पीपल. ठीक है, थोड़ा सा थॉट आउट करके भेजना है, ऐसे नहीं कि सेम सबको भेज दिया, लेकिन लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, बट यू सेंड इट आउट टू डिफरेंट पीपल. कोई तो रिप्लाई करेगा ही ना, प्रोबेबिलिटी वाला गेम है, 1% रिप्लाई आएगा ही आएगा, है ना. सो you do that and you find an internship and you build upon that. So that is what a first year student can do. और डेफिनेटली एक्सप्लोर करना तो ज़रूरी है फर्स्ट ईयर में, उसमें कोई डाउट नहीं है. यू ट्राई टू एक्सप्लोर लाइक 5-10 थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. सो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी होता है उसके लिए ना. हर कोई ऐसा नहीं होता कि भाई 10th या 12th में या अपने स्कूल के अंदर बहुत ही एक्टिव रहा हो, या फिर पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड एक वो एनजाइटी भी होती है फर्स्ट ईयर में आके कि आई एम नॉट गुड इनफ, है ना. सो यू फील दैट, बट थोड़ा सा यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. नॉट कंपेयर, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, बिकॉज एवरी पर्सन इज हैविंग देयर ओन जर्नी. एक बहुत ही, आई थिंक, one of the famous writers wrote in one of his books that if you want to compare two people, you have to compare their whole journey from when they were born to this state. Don't compare yourself in this moment. Like, मतलब आज वो बंदा कैसा है या फिर आज मैं कैसा हूँ. डोंट कंपेयर दीज टू थिंग्स. इफ यू वांट टू कंपेयर टू पीपल, देन कंपेयर देयर होल जर्नी, like whole 20 years, whole 25 years. So that is how you compare. If you want to compare, you can compare that. So then what you will realize is that people have had their different journeys, and they have had different experiences, and that is why they are different. So basic thing is, don't compare yourself. It's pretty difficult to do, even we do, right? Like today also we compare ourselves. Even I compare myself with other people. It's difficult to do that, but if you can manage to not compare yourself and focus on yourself, focus on what you are learning over a period of time, that will help you, stay grounded and stay in the right state of mind. So that will something that will really help. Yes. Anything? Yeah. Yes, sir. I guess that will be all for today. Thanks a lot for joining. Now my friend will join to say some words. Mike. Yeah. Good evening, everyone. Gratitude is one of the least articulate of the emotions, especially when it is deep. Also, we all know it is not only the greatest of virtues, but it is also the mother of all others. It has been our tribute to host you all. First and foremost, I would like to thank our guest speakers, Mr. Ankush Sharma sir, Mr. Sahil Garg sir, Mr. Hritik Goyal sir, and Mr. Karthik Saxena sir for taking time out of their busy schedule to grace this webinar, as well as for adorning their necessary work and graciously sharing their opinions with us. Let us give them a big round of applause. We have got a lot to learn from you. Lastly, I would like to express my heartfelt gratitude to our audience, without whom this meeting would not have been possible. Rest, Team Ojas has planned more informative events like this for you all, so stay tuned. Thank you. थैंक यू सर. बहुत बहुत थैंक यू. लाइक काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, सारी मेंटरशिप मिल जाए ना, तो लाइक थैंक्स अ लॉट. थोड़े डाउट्स होते हैं बच्चों में भी, अब क्लियर हो जाते हैं तो फिर काफ़ी स्मूथ चलता है. लाइक थोड़ा तो लाइक आनी चाहिए तभी तो. थैंक्स लॉट सर. थैंक्स फॉर बीइंग आवर सीनियर्स. थैंक्स फॉर बीइंग सो वंडरफुल. थैंक यू. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. We will end the session here. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for the invitation. Thank you. Yes, thanks. Yeah.